uh, Dr. Kiran Jalem. He is faculty in the School of Natural Resources and Management, Department of Geoinformatics, Central University of Jharkhand. Uh, he is a very busy man, but he loves to teach or share information with others and is a very academic in nature. So I request Dr. Jalem to start his lecture. Sir, please. Thank you, Dayashankarji. Namaste and welcome all for this post-lunch session. You all must be very tired as it is the mid of the day. I hope all have had lunch peacefully by this time. So kindly bear with me for another 2 hours. And I have around 70 slides. I had come up with 70 slides. And I would like to go with English, Hindi also at times, as in when required, as in when I think it is really needed, where I should emphasize certain things in Hindi, I will definitely use Hindi. So altogether, I will use Hindi plus English, so-called Hinglish, to make you understand this subject. As you are aware, my subject is gender and disaster. Hope you all must be aware by this time what is gender and what kind of information we're going to understand in this subject. And as you all know, gender is a cross-cutting discipline. Everywhere it is applied. So in disasters, how we look through gender lens is what the main focus of my presentation. So I hope you all are aware of basic fundamentals of gender, but still I would like to start with basics and then slowly move on to disasters, and then how we relate disasters with gender and what kind of gender sensitive mitigation measures are to be adopted to manage disasters. So that kind of information I'm going to give you in next 2 hours. This is all about me. I work for Central University of Jharkhand in the Department of Geoinformatics. And I teach disaster management, of course, to my university students. I'm a national trainer myself. You must be aware, every child is born as a male and female. Yes, that's nature. Every male grows up to become a man, whereas every female grows up to become a woman. This is true, prevailing across the globe, universally correct. Fantastic. So now, I would like to test your basic understanding. All kindly respond to my questions and type your answers in the chat box so that I will understand what kind of knowledge you possess about gender. So this is a simple quiz kind of questions. Kindly respond to me in chat box. If you're allowed, you can speak definitely, but that should not hamper our discussion. Okay. Basic understanding, as everyone are clear, understanding sex and gender is nothing but man. When you call a man, is definitely a male sex, masculine in social role. Why am I saying social role? Because men are expected to perform some kind of acts in this society. The masculine social role pertains to man, of course. Similarly, woman, female sex plus feminine social role. She has to perform certain social activities that are exclusively pertaining to a woman or a female. This is very common understanding by everyone, but gender is beyond. We will try to understand further. Now, I'll quickly ask you, identify the gender that comes to your mind when you read these things. Cricketer,
Somebody answer in the chat box, please. What comes to your mind? A man or a woman? Male or a female? What kind of gender that comes to your mind? I think I should chat box mein kuch. Yeah. I didn't get any. Oh, male from Chandrima Chakravarti. Wow, fantastic. Okay. Cricketer is male. Okay. 1 minute. Where is my presentation gone? Can you all see my presentation? Is it visible? Yes, sir. Okay, fantastic. Okay, fine. Cooking. What comes to your mind? Male or a female? Woman or a man? Child care. Who is good at it? Man or a woman? Male or a female? Driver. Yes. Please respond to every question. Sewing. मतलब कपड़े सिलाना का काम. What comes to your mind immediately? First thought. Don't wait or don't read here and there or take time in answering my question. At a glimpse, on a first thought, what comes to your mind? Chef, hospital nurse, night guard. See, I just took few characters and I was trying to ask you what comes to your mind about these characters. So many of you have answered male, few have answered female. Chef, they might have answered male also, because people in, males normally cook food in hotels, whereas females cook food at home. That could be a reason. Child care, females can give better attention to children. Drivers, men are good at driving skills. Maybe you're true, but there are female drivers. I can see females running autos, cabs also in southern part of India. I belong to southern part of India. Of several examples I have. Hospital nurse, what comes to your mind normally is a female. Why can't a male do nursing job? Like giving first aid, doing CPR, whatever, applying bandage, cream, etc. Why not a male nurse can do this job? How about night guard? Why only male? Why not female? Nowadays, females also do nighttime jobs like call centers. They work whole night. This is prevailing everywhere, every country, every nook and corner of this globe. So, some kind of understanding you've got, I wish. Normally, what is the difference between sex and gender? If I say, what comes to your mind now? Men have beard and mustache like me. That means, is it representing sex or gender? Can anyone answer this question? I have to check chat box now and then. I'm sorry. I've done an entire screen. That's a problem. I don't find much responses from any mail. Okay. Chandrima is very fast in answering my questions. I'm very glad. Arup Bakshi, is it the same person? Daya Shankarji. Gender, okay. Man, okay. Beard and mustache is gender. Okay, good. Slowly I will clear your thoughts. Just hold for a moment. Let me get back to my presentation now. Okay. Okay. We are here somewhere. Yeah. Men are leaders. If I say, is it pertaining to sex or am I talking something referring to gender? Why women cannot be leaders? They can also be leaders. So it is not necessary sex here. Try to understand. Women bear children. Of course, they do give birth to children. True. Again, sex. Women are good care providers.
Why not men? Men also can extend good care. They're also good at it. I care for my family. I care for my wife, my children, my elders in my family, my dependents. So this is again a gender statement. Kindly understand what is sex, what is gender. Just to test your understanding, I am posing these questions. Nothing much. Women are good cooks. Why not men? Is it a sex statement or a gender statement? It is purely a gender statement. Men can also be good cooks. Yes. Women breastfeed. Yeah, this is what men can't do. So this is a sex related question, right? Men are better in mechanical jobs. Why not women? They're also doing good job. They're also excelling. They're also developing their skills. We do have Kalpana Chawla, went to space. Of course, she's no more. We have another Indian origin, Sunita Williams, doing well with NASA in space assignments. Girls prefer home science rather than mathematics. Why? It is again a gender question. So you should clearly understand what is sex, what is gender. Why not girls prefer any damn subject that boys prefer? Why can't they excel? Why can't they perform? Why home science? Why not mathematics? Men have more body hair. Maybe true. Weak men, boys cry. Is it a gender statement or a sex statement? It's a gender statement, obviously. मर्द को दर्द नहीं होता. ये कौन बोला? क्यों बोला? दर्द क्यों नहीं होता है? होता है. Weak men cry. Weak boys also cry. Girls also cry. Girls should not move out at night. Who imposed this rule? Who imposed this restriction? I have seen girls moving on the roads in the middle of the night. When I, for the first time, visited the state of Gujarat, probably 12 o'clock, 1 o'clock, I landed in Ahmedabad airport. And on the drive to Anand, which is very far away, 1.5 hour journey by road from Ahmedabad, I've seen many women walking on the roads with no fear. This is something very interesting, very astonishing to me. Even the father of the nation, Mahatma Gandhi ji, said, I consider independence only when females move late in the night, sometime around midnight. Then I think full independence has come to us. This is true. Everyone have the right to live life with dignity. There's nothing as such. Girls should not move out at night. That's not correct. It's not a sex statement. It is a gender statement. Transgender cannot work in formal organizations. Who said everyone have rights? Supreme Court has already declared, provided them with every right to contest in elections, work in decent jobs. Who are we to stop? This is again a gender statement. Transgender cannot work in formal organizations, which is never true. But we fail to accept certain things in this society. That's where the gender comes into picture. We need to think through gender lens. Whatever we do, hope you have some fair understanding by this time about sex and gender. Slowly, I will make you more comfortable in understanding this subject throughout my presentation. A woman is driving on the road. Of course, women do drive. They are also good at driving. And this is a small example I'm trying to quote here. Normally, females drive cars. They go on the road like men, every other human being. The other car, one man is driving on the same road, but going in the opposite direction. What does that mean?
the female is driving this direction, the male is coming in this direction. So there is likely possibility of seeing each other at one point of time. Every chance. They are driving on the same road, of course, different lane. If it is in the same lane, they end up colliding with each other. Accident could happen, but it is not that scenario here. It is the road is same, but the lane is different. One coming in the opposite lane, the other going in the opposite lane. Now you understood. Woman is coming in one direction. The man is driving a car in the other direction, but in different lanes. They'll never collide, but they will definitely see each other at one point of time. Hardly for a second or 10 seconds, if the car goes slow, whatever. That much is the only time gap between them to see each other. Now you understand the situation? Okay, let me go a little further. When they intersect, when the woman was about to cross this man who is driving the car in the opposite direction, likely to see each other at one point of time, slowly after that they will pass each other. Okay. So when they intersect, the woman takes her window down and says, horse. जो लड़की गाड़ी चला रही है, वो जो लड़का गाड़ी चला रहा है उसको देखी. कब देखी? जब वो नजदीक आया. In the opposite direction they were traveling. उन्होंने क्या किया? तुरंत विंडो को डाउन किया और लड़का की तरफ देख के बोला, हॉर्स, घोड़ा. घोड़ा बोला. तो immediately the man takes his window down. Or suddenly someone saying to me, Goda, horse, how? I don't know that lady. I never saw her. I just saw in a fraction of a second that some woman is driving a car who is coming opposite to me. Just took her window down and said, horse to me. How can anybody say that? So suddenly male ego has come up. How can anyone say that to me so easily in a fraction of a second? So let me respond. Let me use such a word that will torture. In fact, that will create some kind of disturbance to that woman's mind. So let me use the word which means Dayan. ये घोड़ा बोला, ये Dayan बोला. Dayan बोल के बहुत खुश हो रहा था. Yeah, I am very happy. My ego is satisfied. She said, Goda, I said double the word, which. So he is very happy in his mind, thinking that I gave good response to her. She will never forget this. I tit for tat have done inside. That male ego, whatever, is being satisfied by saying that woman, which. See what happened? The next. They keep going on their own way after crossing, intersecting each other. They were moving in their own direction, in the opposite directions. But the man who is laughing for what he told the woman takes the first curve. थोड़ा आगे जाके थोड़ा मोड़ लिया. मोड़ने के बाद क्या हुआ? ये हुआ. See, ये कभी सोचा नहीं होगा वो. अरे वो मुझे घोड़ा बोला और मैंने जवाब दे दिया. इतना ही सोचा, उतना में खुश हो रहा. लेकिन उससे ज्यादा अधिक बोलने का समय है वहां? बिल्कुल नहीं. Hardly seconds time. दोनों were traveling in the opposite direction. Had they traveled in the same direction, they would have maintained same speed and can speak for a while. But that is not the situation. Situation is totally different. Hardly they could be able to see for a second or 2 seconds, at the most 3 seconds, 5 seconds. There's nothing they could talk except saying horse, that lady. And this guy reacted immediately, said which to her. But he never understood what she was trying to say, why she said horse to me. In this particular scenario context where someone is driving cars in the opposite direction, how can anybody visualize to that extent and suddenly something goes wrong after taking the curve? So the lesson of this story is men never understand what women say. Actually, this is on the lighter side of the story.
I don't agree to this because we understand women very well. I myself, I am a feminist. I understand my wife very well. I understand my daughter. So I will never agree to this. But this is just to cheer you up. I use this story. Usually, men doesn't understand women so easily, so amicably they go. Why? Because I would like to use Martin Luther King's statement here to make you understand better. People do not get along. हम एक दूसरों के साथ जाते नहीं हैं because they fear each other. हम एक दूसरे से डरते हैं. मतलब अगर मैं किसी दोस्त के साथ जाऊंगा और दोस्त बहुत स्मार्ट है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, मेरे को इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा. तो some kind of inferiority complex feelings. He is smart, I'm not smart. If we go together, people will ask him more than me. So why should I go? Let me avoid this kind of feeling. That is the reason why we don't get along. आप सोचिए, people fear each other. हम एक दूसरे से डरते क्यों हैं? Because we do not know each other. एक दूसरे को जानते नहीं है तो डरेंगे ऑब्वियसली. अरे वो कैसे आदमी है, उसका पास क्या काबिलियत है, किसी लिए मैं डरूं उससे, पहले उसके बारे में जानकारी तो लूं. बे मतलब को मैं डर रहा हूं. अरे वो स्मार्ट है, वो काबिल है और मेरे को इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा उसके साथ जाऊंगा तो. यही सोच के हम साथ में नहीं जाते. सेम चीज इज हैपनिंग विथ फीमेल एंड मेल ऑल्सो. अगर फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो मेरे से आगे निकल जाएगी, हमको दबा देगी, तो क्यों मैं दूं? So that kind of thinking that goes inside of one gender. Okay, so we fear each other because we don't know each other. Either don't know each other because they have not communicated with each other. एक दूसरे से बातचीत नहीं किया. बातचीत करता, अच्छा कम्युनिकेशन होता तो एक दूसरे का स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता चलता, तब साथ मिलके कोई भी काम करता. एज ए टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. टीम का डेफिनेशन, साथ में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे ना. लड़का लड़की साथ में पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है. मेल एंड फीमेल कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, समाज में कितना तरक्की कर सकते हैं हम लोग. It's just an example. Wonderful words by Martin Luther King. We don't get along because we fear each other. We fear each other because we don't know each other. We don't know each other because we have not communicated with each other. एक दूसरे से बातचीत जारी रखा नहीं है, समझे नहीं. वो क्या जानती है, वो क्या नहीं जानती है, ये क्या जानता है, ये क्या नहीं जानता है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, नथिंग. बात ही नहीं किया तो साथ कैसे चलेंगे? डरते रहेंगे एक दूसरे से. दैट्स अ प्रॉब्लम हियर. ओके, नाउ साथ चलने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये सभी मानते हैं. वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प, ब्रीफ, एग्जैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट. उस लेवल का कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी दूसरा आदमी समझेगा ना आपका बात, आपका दर्द, आपका वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ, व्हाटएवर. So one small message, Raghu, the door is open. एक छोटा सा स्टेटमेंट है, दरवाजा खुला है. वेरी सिंपल स्टेटमेंट, दरवाजा खुला है. देखिए, एक स्टेटमेंट से किस प्रकार का अर्थ निकल सकता है, वो अनर्थ भी हो सकता है. एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट can be interpreted in many ways, depends upon the context, depends upon the scenario where you are referring to. Just see this example. दरवाजा खुला है, door is open. That means एक hidden meaning है इसमें, interpretation है. Please come in.
दरवाजा खुला है, please come in. One kind of interpretation. Please leave, दरवाजा open. दरवाजा खुला है, जाओ आप. ये भी एक मीनिंग होता है. Scenario may be different. You're not happy with someone and you wanted that person to leave your room, so you can show them the way, looking at the door. दरवाजा खुला है. That means you can go. Okay. I'm not forcing you to stay back. इसका क्या मतलब हुआ? भाई दरवाजा खुला है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है अंदर बैठने का, आप जा सकते हैं. कुछ काम है तो जाओ, लेकिन हमको डिस्टर्ब मत करो. ये भी एक अर्थ उसमें हो सकता है. लेट्स गो इन. दरवाजा खुला है, चलो घुस जाता है. That somebody was late to the class and they find the door is open, so let's get in. किसी को पूछना नहीं है, दरवाजा खुला बंद है तो नॉक करना पड़ेगा. बंद नहीं है, खुला मिला तो घुस जाओ. ये भी एक अर्थ है. एक्सक्यूज मी. दरवाजा खुला है लेकिन आप कुछ गलत काम कर रहे हैं अंदर रूम में, कमरे में, तो प्लीज डोंट डू इट. ऐसा मत करो. सम माइट वॉक एट एनी टाइम. कोई भी आ सकता है क्योंकि दरवाजा खुला है. ये भी एक अर्थ हो सकता है. You're trying to do something funny and you're not aware that the door is open, so some might walk at any time inside the room and find you doing nasty thing, some funny thing. So it is kind of embarrassing situation it could be. Please close the door. ये भी एक अर्थ हो सकता है. दरवाजा खुला है, प्लीज क्लोज द डोर. अरे खुला है, बंद करो ना भाई. ये भी अंडरस्टूड है. ओके. Why didn't you close the door in a scolding manner? आपने कुछ गलत काम किया, गंदा काम किया और दरवाजा खुला, कोई देख भी लिया आपको और आप अपने मित्र को कह रहे हैं, अरे आपने बंद क्यों नहीं किया, खुला क्यों छोड़ा, देखो वो आदमी देख के चले गया, आप मेरा शिकायत कर देगा, मेरा नौकरी जाएगा. ये भी एक अर्थ हो सकता है. See how many interpretation from a single line the door is open. ये भी हो सकता है. आपके पास सर्वेंट हैं लेकिन वो केयरलेस हैं. जब भी दरवाजा बंद खुला रहता है, आप सर्वेंट को काफी बार बोल चुके हैं, प्लीज क्लोज द डोर. जब भी ओपन दिखता है मुझे पसंद नहीं है, दरवाजा बंद रखा करो. लेकिन सर्वेंट ने ध्यान दिया, दरवाजा खुला की खुला रह गया. और आप इसमें सर्वेंट को भी दोष दे सकते हैं, साला मेरे नौकर जो है हमेशा केयरलेस होता है, कितना बार भी समझा उसको दरवाजा बंद करने के लिए लेकिन खुला छोड़ देते हैं. That kind of interpretation is also there in this statement. Somebody has big plans of stealing something from a room and the door of that room is open. What will they feel? They feel, what a stroke of luck. We don't need to break in. हमको दरवाजा तोड़ के जाने की जरूरत नहीं है. हम हथौड़ा लाया, RDX लाया तोड़ने के लिए, लेकिन क्या जरूरत है, दरवाजा खुला मिला, घुस जाओ, जो काम करने के लिए आया वो कर जाए. So these kind of meanings, interpretations can be drawn from one single line of statement, the door is open. That means our communication should be very crystal clear. In what context you're talking, with whom you're talking, what you wanted to talk. When are you going to communicate this? Everything is important here. For a proper disaster management, you need to have proper communication. That should not lead to several interpretations like these. इतना संभावना नहीं होनी चाहिए, इतना permutations, combinations, इतना choices नहीं. एकदम crystal clear. Right time, right information to right person अगर आप देंगे तो disaster management हो जाएगा. हम सोसाइटी में साथ चल पाएंगे. So communication has that much importance. Communication के बिना एक दूसरे को डरते हैं, एक दूसरे को जानते थे नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते और ऐसा बात करते हैं जो सेवरल अर्थ निकलते हैं. कौन सा मैं लूं, which is true, all must be true in some or other context, but you need to establish that proper communication. Okay, sorry, I'm little not feeling good in my throat. Now that you understood sex,
gender to some extent. Slowly we'll dig deep into this subject. Sex connotes only physical difference. Example, the way we are biologically born. Male, female, man, woman. Biologically, it is true. Biologically determined, fixed, does not change with time, does not vary over cultures. The female born in India also looks the same as the female born in Western countries because biologically they are same. They have the same organs, same color, texture, tone. Could be little different, but biologically they are similar. Female reproductive organs, that's common. Universally, that is true. But whereas gender, it connotes different social roles of men and women in society. Example, men mostly as we see as breadwinners. मतलब मर्द होता है घर में कमाने वाला, घर का जरूरत पूरा करने वाला, like ATM machine समझो. Men are like that, breadwinners. They earn bread for their family. Women performing household chores. मतलब घर का अंदर जो भी काम होता है, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, घर को साफ रखना, झाड़ू पोछा, बच्चों को देखभाल करना, बुजुर्ग होते दवा दारू खिलाना, ये सब महिला का नाम से जुड़ गया. Social role. I'm talking about social role. That's where the gender comes into picture. Because it is socially determined. It is not universal. It is limited. It is dynamic and changes with time. समय के साथ सब बदलता है, रोल बदलता है. जवानी में लड़की का रोल अलग हो सकता है, शादी होने के बाद लड़की का रोल अलग हो सकता है, माँ बन सकती है, रोल बदल जाता है. उस उम्र होते ही रोल बदल सकता है. Differs from culture to culture. यहाँ का महिला का अलग वेश, अलग कपड़ा में आप देखेंगे. इंडिया में वेस्टर्न कंट्री में से कुछ और कपड़ा होंगे, छोटा कपड़ा होगा, स्कर्ट्स होगा, व्हाटएवर, बट इट डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. पर्दा कल्चर भी एक है, खास करके एक कम्युनिटी में आप देखे होंगे कुछ बुर्का टाइप का पर्दा पहन के जाता है. दैट इज देयर कल्चर, वी शुड रेस्पेक्ट. तो जेंडर डिफरेंस डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, dynamic and changes with time, and is limited in nature. It's not universal. It can change anytime. This is the basic understanding of sex and gender. Now, gender is more than biological differences between men and women, boys and girls. We understood this. Gender defines what it means to be a man or a woman, boy or a girl in a given society. समाज में एक लड़का लड़की कैसे होना चाहिए, social roles and responsibilities डिटरमाइन करता है जेंडर को. वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, इवॉल्व्स ओवर टाइम. अभी का अलग हो सकता है कॉन्टेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम कॉन्टेक्स्ट बदल गया होगा. मे बी इन सम कम्युनिटी वुमेन आर नॉट अलाउड टू स्टडी, बट लेटर ऑन दे थॉट दे शुड स्टडी. सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस हैव कम ओवर टाइम. affects access and control over social, economic, political opportunities. ये भी डिटरमाइन करता है जेंडर को. जैसे हमने पहले बोला, वुमेन आर गुड कुक्स, घर पे खाना बनाता है, वी ऑल आर हैप्पी. बट व्हाई नॉट द सेम वुमन कैन कुक फूड इन होटल्स? व्हाई? If they cook, they will also get paid for that. They will improve their social status, economic status accordingly. But they were denied with that opportunity. Male have dominated because a lot of money was flowing into it. So male thought, I can grab this opportunity and do cooking as females do at home. So that kind of access and control differs in gender context. Women, men, both are affected by and influence gender norms and rules. I don't say only one is affected, both are affected. Gender is not sex or gender is not woman. If you see this slide, I'm not talking about only sex. I'm not talking about only woman.
I am talking about both. See how. I am just focusing on the unequal relations between men and women that are created by society and how to change them. The kind of unequal relations that exist in society, men are supposed to do this thing. Gender roles have been fixed for him. Gender roles for women are different. Because of that, a lot of differences are being seen in the society. So these differences ought to be eradicated. So gender is nothing but a focus on the unequal relations between men and women that are created by society. They're not just like that. They are created. And how to change them? Why to change them? Because we need to travel together. We need to understand each other. We need to communicate for a better living, for better standards of life, to progress in life. So this is what gender talks about. It's not about women. It's not about sex. It is more important to men, rather, I must say. Men should change their thought process, their thinking, because the other gender is being suppressed. This is what we noticed. But over the years, one gender may surpass the other, like females may dominate males. Then the same subject applies to male also. It's not that now it is being applied to female. Let everybody study gender for the sake of woman empowerment only. No, it can be men empowerment also tomorrow if one gender surpasses the other. So what our understanding is, just to maintain balance between two genders. This is what we are going to focus. Societal rules for him and her. You all know. Women are primarily responsible for collecting water for household. ये हम गांव में देखते हैं. शहर में ऐसा स्थिति नहीं होंगे. मर्द भी अपना responsibility निभाता है mostly, like fetching water for the house, etc. But usually in Indian context, typical Indian context में women are primarily responsible for collecting water for house. Water shortage जब होगा, contamination of water होगा due to climate changes. Lot many things are happening. That's not our subject, but still, because of climate change, lot many changes are being observed nowadays. Rainy days come हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, species extinct हो रहा है, lot of biodiversity erosion is happening. So water shortage, contamination का कारण, climate change के कारण, disasters lead to additional burden on women. So extra burden, and spend more time and energy in collecting water from distant sources. यहाँ का नदी पोल्यूट हो गया तो दूर का नदी से लाना पड़ रहा है पानी अपना घर के लिए, वो भी महिला को लाना पड़ रहा है, और ऐसा रास्ते से जाना पड़ रहा है, वो कच्चा रास्ता है, जंगल का रास्ता है. Is it safe for the woman? Again, question. Why can't we address this problem? Yes, we can definitely. I'll tell you how. Women are expected to feed other family members before eating themselves. हमारे कल्चर में क्या हमने बनाया? महिला को सबसे पहले घर में खाना बनाओ और सबको खिलाओ, उसके बाद बचा हो तो तुम खाओ, नहीं बचा तो भूखे रहो. यही हमारा मतलब है. And men are expected to earn and provide for their families. मतलब मर्द है, वो काम है कमाना है, खिलाना है, सामान घर के लिए लाना है, बीवी को दे देना है, बीवी खाना बनाएगी और खिलाएगी, बच गए तो खाएगी, नहीं बचा तो कुछ नहीं खाएगी. ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं महिला से. अगर क्रॉप्स फेल हो गया, खाने के लाले पड़ गया, सुकाड़ पड़ गया, अकाल पड़ गया, जो दाना बचा कुचा वो भी खत्म हो गया, बाढ़ में बह गया, ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा कि नहीं ऑन द वुमन? How can she cook food and offer to her own family members now because the situation is too worse? So this is another expected role of women in society. Men are the decision makers in household and community. घर पे भी मर्द का ही चलता है, बाहर समाज में भी मर्द का ही चलता है. For example, in disaster preparedness planning and decisions related to disaster response at community level is dominated by the males and also many times limited to men only.
This exclusion of men results in lack of awareness of plans and preparedness. We are excluding women from taking decisions at household level, also in community level, because we are not allowing them to participate, raise their voice, listen to them, assess their needs, work on their necessities. No, some kind of social norms have been fixed, gender roles, preconceived notions से चलते हैं हम. Household chores are a responsibility of women. घर का काम, घरेलू काम महिला को करना चाहिए. ये कौन बोला? Is it written anywhere? No. But still we expect that to happen in our own houses. Disasters often lead to many single men-headed households. आपदा का बाद अकेला आदमी रह जाएगा, परिवार में सारा महिला मर गया, समझ लीजिए, डॉटर, वाइफ, etc. Then with the limited knowledge of household chores, men find it extremely difficult to cope with the expectations of the new role. अरे मुझे घर संभालना है, घर को साफ करना है. पहले मेरा बीवी हुआ करता था, वो बढ़िया से साफ करती थी, बच्चों को देखभाल करती थी, खाना पकाती थी, परिवार को सबको खिलाती थी, और हमको ये सारा काम अपने से अकेले करना पड़ेगा. Because I don't know how to do. I never learned. Because it is a responsibility of women. मैं समझ रहा था all these days. But how can you cope up now? Men are the breadwinners of family. ऐसे भी सोचते क्यों? महिला भी तो नौकरी करके पैसा कमा के घर का काम में हाथ बटा सकता है, खाना खिला सकता है परिवार को. Why only men are treated as breadwinners of family? Climate change and increase in frequency of disasters striking new geographies catches communities unprepared for the disaster. Livelihoods are lost suddenly and men go through episodes of extreme stress and take extreme steps like committing suicide. कौन बोलता है मर्द को दर्द नहीं होता है? होता है ना. When he loses his job, when he is not paid and he has a lot of responsibility to take care of, bring food, meet the needs of the family, तो क्या करेगा? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का तरफ जाएगा. गुस्सा में वाइफ बैटरिंग करेगा, नौकरी नहीं है, गाली गलौज करेगा, कुछ भी कर सकते, सुसाइड भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स है वी हैव. क्रॉप फेलियर हुआ, सुखाड़ पड़ा, और मोर देन 1100 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड. ये न्यूज है 2015 का. So who said मर्द को दर्द नहीं होता है? Yes, we all are subjected to distress. So whatever you do, you need to keep all these things in mind. Like you're asked to lay down a road in your village. आप तो officer है and the government has asked you to lay down a road to your village. They have sanctioned a road to your village. And you're very happy. Being an officer, you wanted that to happen. You are given money, you are given freedom to execute. और आपने क्या किया? Being a responsible officer, male citizen of this country, आपने क्या किया? Every village has a community hall. Or you thought, if I take this road towards a community hall, my village will be very happy, because every evening all the villagers, men, women, girls, boys, come there, sit together, chat, discuss, prioritize their goals, what they want in future for their village. So that is a common meeting place, so-called community hall in a village. So you are happy to lay down a road towards a community center in a village, and you think all are happy in the village. But it is not right. I tell you why. Normally in villages, we do have problems like no water, proper water, potable drinking water in and around the village. People suffer a lot to bring it from faraway places. Usually women do that, as I said earlier. And no proper health care in the village, because there is no proper road to the hospital. And children of the village are not able to go to school and get educated because there is no proper road to that school.
Schools are also in dilapidated condition. So this could be common problems in a village. But what you thought is community center is a better place. So I can take road towards community center that will help everybody of that village. But this is a false notion. Had you taken the road towards a hospital, the people in the village get treated very well on time and your health will improve for that village. आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है. Had you taken the road to a school, nearby school in that village, the children of that village can easily go to the schools, get educated, come back to their homes, live happily with the family. But you have not done that. Had you taken the road to a nearby drinking water supply source, like a river, nadi, nala, whatever, the women of the village can easily go get water from that through that road using bullock carts, cycles, whatever. See, three problems can be addressed where women can directly get benefited. Of course, road is essential for both gender. Men and women travel together on the road. It helps both. But at the same time, if you look at through a gender lens, you will understand what kind of problems one gender is facing, how to overcome, where to pump my money, rather than pumping my money in gender neutral sector, like road building. So everything, everywhere, this gender lens approach should happen. In my own Jharkhand, where I live, where I work, I've seen the women of Jharkhand working so hard. They even, take their children along at the back. They tie them with sackcloth and to go for work. They collect fuel wood for fire in their kitchens. And I've seen many men in Jharkhand just roaming around, playing loud music or, drinking all the time, doing nothing. But women are very hardworking, what I've seen. Right in the market, right from selling vegetables to selling wine, daru, whatever we call, all the women are in that activities. So why can't we help such women? Like create some storage spaces in the market. The woman who is carrying vegetables from a faraway village to the market to sell vegetables, make some money, earn something for their family, can easily store the rest of the vegetables which were not sold that day. बचा कुचा वेजिटेबल्स को वो मार्केट यार्ड में स्टोरेज स्पेस में लगा के चाबी लगा के घर चले जाएगी, अगले दिन आके फिर ओपन करके बेचेगी. अदरवाइज उनके लिए दिक्कत हो जाएगा. मतलब सामान फिर से गांव ले जाओ, बचा कुचा फिर अगले दिन ले आओ. Lot of transportation cost is involved, very difficult to carry all the time. Or else आप एक ऐसा बस फैसिलिटी दे दो जिसमें महिला अपना सब्जी का साथ अपना खुद बैठ के आ जाएगी, लेकिन बस ऐसा हो जिसमें सीट वगैरह ना हो, केवल फ्लैट फ्लोर हो, मतलब no seats to sit, flat bus where she can put her vegetables at one corner and sit next to it and then come to market, sell vegetables, whatever, and then get back home easily at the end of the day. Such kind of thoughts should go on. In Jharkhand, you don't believe, if a girl wants to marry, we have Mukhyamantri Kalyan Yojana. She gets some money. If a girl wants to study, her fee is waived off till PG level. She did not have to pay anything in school, college, university, even at PhD also nowadays. That kind of facility we are giving. And the dropout ratio is so high. Out of 100 girls who take admission in senior secondary schools in Jharkhand, 65 girls, children drop out from school. Many reasons are there. I'll tell you one by one later. So in order to help them, government has thought of giving bicycles to these girls. They ride bicycle to school. Several such initiatives are being taken up just to bring one gender close to the other gender. Otherwise, we have around 90 to 20% difference in between both these genders. Literacy rate
47 in Bihar, you all know it. So between female, male, it is another 19, 20, 18% difference is there. So what I wanted to emphasize here is, whatever initiatives you take, let both the genders come close, work hand in hand, move together in this society for a better standards of life. So what kind of impact of disasters on women would you notice normally? See what women are doing there, carrying potable drinking water through these flood waters. There could be a lot of danger in these flood waters. They can take you away. बाढ़ में बह जाएंगे आप, आपको स्विमिंग नहीं आता है, whatever may be, और आपका सांप वगैरह है तो वो काट लेगा. You never know, anything can happen. Situation is that extreme here, and they cook food for the family. You see, in the instances of early marriage, this is simple example. मुजफ्फर राइट्स जब हुआ है यूपी में 2013 में, कुछ रेफ्यूजी कैंप्स बना है. इस कैंप्स में रेफ्यूजीज को रखा गया, जो राइट्स का शिकार हो गए थे, विक्टिम्स हो गए थे, उन सबको एक जगह सुरक्षित रखा गया सरकार ने. तो वहां क्या हुआ देखिए, within a period of 3 months after settling in camps, 200 adolescent girls got married and there were preparations for more marriages in Sunati camp. ठीक है, जवान लड़की है, शादी कर लो, करा दो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. यही सोच है. Women's need and dignity is overlooked by men and boys because shelter and food security are the highest priorities. हमने बसा दिया, जो victims है उसको हमने एक अच्छा जगह रख दिया, खाना दे दिया, इससे आपका काम खत्म. उस जेंडर का नीड कहाँ देखा, उस जेंडर को डिग्निटी के साथ रहना कहाँ दिया, ओवरलुक किया. Women are facing serious issues related to privacy for the needs related to menstruation, breastfeeding, sickness. क्या क्या, अगर नहाने भी है तो टेम्पररी बाथ स्पेस देख रहे हो आप लोग कैसे है, चार तरफ पर्दा डाल दिया और वो बाथरूम बन गया. ऐसे में कोई भी महिला सुरक्षित नहा सकती है? आप ही बताइए, हाउ सेफ शी इज. इट्स अ क्वेश्चन अगेन on this community. Burundian refugee populations in Tanzania, जुलाई 2000 में ये रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, they had to stop supply of soap to 0.5 million Congolese. ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है ये देश. यहाँ क्या हुआ देखिए, there was an increased rate of girls having sex in exchange of soap. साबुन के लिए, सेक्स पे करने के लिए मजबूर हो गया जो देने वाला के साथ. Lack of soap was also reported to be a factor leading high rates of sexually transmitted diseases among women and girls. बीमारी भी हो गया, STD, sexually transmitted disease. So women are biologically vulnerable because उनका बॉडी ऐसा बना है, थोड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी मानते हैं. और स्टैम्पीड्स में अपने जो स्टैम्पीड को क्या बोलते हैं, मेलास वगैरह में देखते हैं ना आप, सडनली कोई रूमर फैला दिया, लोग भागदौड़ करने लगते हैं, भागदौड़ में मर भी जाते हैं लोग. ऐसा बहुत बार हुआ, काफी जगह हुआ. बहुत सारे एग्जांपल्स यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट एज वेल. सो जब कई हादसा होता है, रिलीफ बांटा जाता है. हाईली इनएक्सेसिबल प्लेसेस में रिलीफ कैसे बांटा जाता है? ऊपर से खाना का पैकेट्स फेंका जाता है हेलीकॉप्टर से, एयर ड्रॉपिंग फॉर रिलीफ. बाढ़ के इलाके में खास करके इस तरह होता है. अगर इस तरह जब होता है, जब रिलीफ लेने के लिए लोग भागदौड़ करते हैं, इसमें हाउ एनी फीमेल कैन रन इक्वली ऑन पार विथ मेल एंड कलेक्ट हर शेयर ऑफ रिलीफ. यू जस्ट टेल मी, इज इट दैट इजी? जो भागदौड़ में एक दूसरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, कोई कुछ भी हो जाए, मेरा खाना मुझे मिल जाए, मैं जिंदा रहूं, मेरे परिवार के लिए एक नहीं 2 बोरा ले जाऊंगा. दैट काइंड ऑफ डेस्परेटेडनेस होती है क्राइसिस सिचुएशन में. उस सिचुएशन में अगर कोई भी महिला दौड़ के अपना हिस्सा ले सकती है, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू गाइस, नॉट दैट इजी.
because she's not that physically strong as men. Social vulnerability देखिए, cultural devaluation, saving sons, एक एग्जांपल मैं दूंगा बाद में, patriarchal society, decision making, victims of violence, gender connotation, restricted mobility. महिला को आपने क्या किया, समाज में बांध लिया, मतलब ज्यादा घूमना नहीं है, रात में कहीं जाना नहीं है, किसी का साथ बातचीत करना नहीं है, किसी के साथ जाना नहीं है, जो भी चाहिए हमें बता दो, एज ए मेल हेड ऑफ द फैमिली मेल आके दूंगा, उसको हेल्पलेस विक्टिम की तरह देखते हैं, वायलेंस का भी शिकार बना देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, वाइफ बैटरिंग, डिसीजन मेकिंग में साथ नहीं देता है, पूछता तक नहीं है कुछ भी करने से पहले, पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं हम लोग। और लड़का को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है घर में, लड़की को कम मिलता है। यू माइट हैव सीन दिस हैपनिंग एवरीवेयर। लड़का है तो व्हाट वी डू, उसको एडमिशन कराने के लिए विदेश में भी हम सोचते हैं, अच्छा अच्छा स्कूल में कॉलेज में कराता है, जमीन जायदाद सब बेच डालता है, बैंक में लोन उठा लेता है, खुद को गिरवी रख लेता है। अगर लड़की की बात आती है तो अरे छोटा मोटा स्कूल में पढ़ लेगी, बाद में तो शादी करा देंगे तो किसी और का घर जाके रोशन करेगा, हमारा घर में काम नहीं आएगी, तो व्हाई टू वेस्ट मनी ऑन हर। एज ए माइनस वी ऑलवेज थिंक फॉर गर्ल्स। अगर गर्ल है तो खिलौना खरीद के देंगे, घर पे खेला करो, इंडोर गेम्स खेला करो, बाहर मत जाओ करो, और बाहर जाएंगे तो साथ में किसी और को भेजेंगे to ensure safety security of that girl. That's a good thing, but that is killing a woman rather, I must say. और लड़का है तो क्रिकेट बॉल बैट दे दिया, फ्रीडम दे दिया, घूम के रात में आता है घर, फिर भी कोई पूछता नहीं है, और वो खेलते कूदते तैरना सीख लेते हैं, कहीं नदी में नाला में दोस्तों के साथ, स्विमिंग भी जान लेगा। लेकिन लड़की को तो स्विमिंग सिखाया, लाइफ सेविंग स्किल्स कुछ नहीं इम्पार्ट किया, कोई स्किल्स बढ़ाया नहीं उसको, ऐसे ही आपने रखा है। तो ये सारा चीज की वजह से वो विक्टिम होते जा रहा था। दैट्स माय वर्जन। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, लेस एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब संसाधन को देने के लिए भी हमको एक्सेस नहीं छोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं देगा, इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं दिया, स्किल नहीं बढ़ाया, कंट्रोल ओवर लैंड भी नहीं दिया, मतलब जमीन खरीदा है तो उसका नाम करे ताकि वो एम्पावर करे अपने आप को, यस मेरे पास प्रॉपर्टी है, नाउ आई कैन थिंक नाइसली हाउ टू हैंडल माय बिजनेस, माय लाइफ, माय फैमिली, वो सोच सकती है ना अगर ताकत मिलेगा तो। विक्टिम्स ऑफ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसा जगह में काम करना पड़ता है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वहाँ हाईली अंडरपेड होते हैं, नो यूनियन रिप्रेजेंटेशन भी होता है, मतलब बीडी मेकिंग हो गया, छोटा मोटा काम जिसमें महिला को यूज करते हैं, लेकिन पैसा देने की बात आते है वी डोंट पे देम एनफ, बिकॉज यूनियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लड़ने वाला नहीं उनकी तरफ से। इवन आपको पता होगा MGNRGA स्कीम पहले लागू किया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महिला को ऐसे ही यूज कर रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, तो उस स्कीम में बदलाव लाया गया, नो एटलीस्ट 100 वर्किंग डेज मिलना चाहिए सबको बराबर, नो मैटर वेदर फीमेल और मेल, और इक्वल वेज मिलना चाहिए, मर्द को जितना पैसा देता है काम के लिए एक दिन के लिए, उतना ही पैसा महिला को भी देना चाहिए, और महिला का परसेंटेज भी 70 से ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार का बदलाव इनिशिएटिव्स लाया जा रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर इज दैट अनइक्वल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। Even day, excuse me. When I speak with a lot of excuse, my throat is becoming dry. I'm constantly having little water. So kindly bear with me. I'm very sorry. Okay. Now, double burden of productive and reproductive labor. When men migrate, leaving behind women-headed households, what will happen? Man has no job. He lost his job because of some crisis, some disaster. So he left home, wanted to make money elsewhere and send it back to home.
By the time woman is all alone, she has to lead the family from front. She has to work at times if that man, the gentleman who has gone out has not sent money on time. She has to make proper arrangements to meet daily needs. She has to play the role of man for that family. This is called as role reversal. She has to earn, she has to feed, she has to do daily activities, so-called reproductive task, which has no any weightage. खाना बनाती है घर में, आप पैसा देते हैं क्या वाइफ को? बच्चों को देखभाल करती है, do you pay anything extra? घर साफ सुथरा रखती है, you don't pay anything. These are all reproductive kind of tasks. तो रोज आता है, रोज करना है, लेकिन उसका कोई अहमियत नहीं है. We don't pay anything. We just take them for granted. We see them as helpless victims. जो भी है हम हैं, आप आपको जो चाहिए हमें बोलिए. This is called patriarchal society. The psychological vulnerability, yes, women has this psychological vulnerability also because they are sensitive, very emotional, but they can face greater stress. वो बहुत दर्द को झेलती है, लेकिन दर्द जब ज्यादा हो जाता है, uncontrollable हो जाता है, then she will burst definitely. This is assessed by NIMHANS, Neuro Institute of Mental Health and Neurosciences, National Institute of Mental Health and Neurosciences in Bangalore. This is true. They have physical vulnerability, biological vulnerability, social vulnerability, economic vulnerability, psychological vulnerability. See what kind of vulnerability they are subjected to. Vulnerability is the extent to which a person, structure or service is likely to get damaged. मतलब डैमेज होने के कगार पे है. उतना सेंसिटिव इश्यू को हम डील कर रहे हैं जेंडर में. Just see. This is the ratio of men and women who died because of earthquake in 2005, Afghanistan probably. Yes, that's a case study here. Why 56% female died against 44% male? Are disasters so effective, so intensive to one gender? मतलब आपदा जो है महिला को ज्यादा असर दिखाती है, पुरुष को कम दिखाती है, या पुरुष को ज्यादा महिला को कम, ऐसा है क्या? नहीं. The impact is the same. It has the same damaging potentiality. Every hazard is a potentially damaging physical event or a phenomenon which may cause loss of life or damage to property, which may arise due to natural man-made causes, which may arise due to accident or negligence. कुछ भी हो सकता है, खतरा, हादसा, आपदा, विपदा. लेकिन ऐसा है क्या? एक जेंडर के लिए कम असर दिखाएगा, एक जेंडर के लिए ज्यादा असर दिखाएगा, इसीलिए फीमेल ज्यादा मर गया, मेल कम मर गया. ऐसा क्यों? जस्ट थिंक. इस केस में क्या हुआ? द सो कॉल्ड पर्दा कल्चर अफगानिस्तान में आप तो जानते हैं, कोई बच्ची पढ़ना चाहती है तो गोली मारा जाता है. मलाला का केस तो आप जानते हैं. शी वांटेड टू गो स्कूल बट दोस फंडामेंटलिस्ट डिड नॉट अलाउ हर टू गो स्कूल. शी डिड नॉट लिसन. अल्टीमेटली उन्होंने गोली मारा. अभी तो जिंदा है. शी इज लिविंग समवेयर आउट ऑफ दैट कंट्री नाउ. यूके में कहीं रहती है और वापस आने में खतरा भी है, उसको मार देंगे बोल रहा है. आज भी अफगानिस्तान का तालिबान का एक ग्रुप है. They were little against certain things. आपने देखा होगा, तालिबान कल्चर बोलते हैं वहां. तो वो लोग की वजह से वहां का महिला जो काबिल है तब भी वो वल्नरेबल हो जा रही है. लाइक जब भूकंप आया, दिन दहाड़े में आया, मतलब ड्यूरिंग डे, ब्रॉड डे लाइट में आया है. ऑल द मेन ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर का मर्द होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, माना जाता है समाज में, वैसा आदमी लोग सब बाहर है, दफ्तर में गया काम करने. हु आर लेफ्ट? ओनली द फीमेल्स, ओनली द चिल्ड्रन, ओनली द बुजुर्ग, जिसका मतलब दवा दारू चल रहा है, बुजुर्ग हो गया, हेल्पलेस है, उसको केयरिंग देना है, तो सारा काम महिला का ऊपर आ गया. रिप्रोडक्टिव टास्क, अनप्रोडक्टिव, रिपीटेटिव टास्क, केयरिंग चिल्ड्रन, कुकिंग फूड, गिविंग मेडिसिन टू द एल्डर्स, taking care of them, all this reproductive task. So महिला ये काम निभा रही तो है, लेकिन जब भूकंप आया, they don't know whom to approach.
what to do, how to save their people, their family members. So what happened when this earthquake has come? All the men were out to their offices. Only females, along with some dependents, were there in the families. And there were sensitive people like us who wanted to help these women. They have extended the helping hand to help these women who are in their homes at that point of time. But none of the women, कोई भी महिला अपना हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है और हाथ आगे नहीं बढ़ाया मदद लेने के लिए, बिकॉज देयर कल्चर डजंट अलाउ. कल्चर में ये कहा जाता है, यू कैनॉट सी ए स्ट्रेंजर. पराये मर्द को देखना नहीं है, पराये मर्द को छूना नहीं है, पराये मर्द को साथ जाना नहीं है, बातचीत नहीं करना है. इस तरह कानून बना के उसको रखा गया. तो वो क्या करती, कोई भी आया मदद करने के लिए, लेके नो नो नो, माय हस्बैंड इज नॉट एट होम, प्लीज गो अवे, आई डोंट नो यू, आई डोंट वांट टू कम, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, प्लीज गो, करके उसको भगा दिया. और इसमें क्या हुआ, भूकंप में तो जान कैसे चले जाता आपको पता है, मलबे गिरने से ज्यादा मौत हो जाता है. अर्थक्वेक्स डोंट किल पीपल, रेदर बिल्डिंग्स डू. भूकंप की वजह से आदमी ज्यादा नहीं मरते हैं, बिल्डिंग्स का मलबे वगैरह गिरने की वजह से ज्यादा आदमी मर जाते हैं. तो लॉट ऑफ फीमेल्स डाइड, अराउंड 56% कंपेयर टू 44. ये एक हादसा है भूकंप का. अब ये देखिए सुनामी का हादसा का, 73% फीमेल डाइड in addition, in comparison to 27% of male. Why? Was something wrong? The tsunami is more close to females than male. ऐसा समझे क्या हम? No. Impact is the same on every human being, but females are dying more in number compared to men. So this is the crux of our presentation: gender and disaster. Why females die more in number compared to men in threatening disaster situations? Crisis में, आपदा में, विपदा में महिला क्यों ज्यादा मर जाता है? तो बहुत सारा रीजन है, सामाजिक रीजन बहुत है. So gender context इसीलिए है. For example, if you see in Cuddalore district, Tamil Nadu, जब सुनामी आया है 391 females मर गए थे compared to 146 men. Why? Because females could not run as fast as men. Physically, they are not agile, able enough to run as fast as men. Of course, this could be a physical vulnerability, a biological vulnerability. Agreed to some extent. Clad in sari. Why sari all the time? You want to keep your women in sari. Tradition में साड़ी में रखना चाहते हैं, गांव में घूंघट में. Why? वो साड़ी पहनने की वजह से वो दौड़ नहीं पाई और स्विमिंग जानती भी थोड़ा बहुत, तब भी वो स्विम नहीं कर पाई फ्लड वाटर्स पे. बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टू स्विम व्हेन यू आर क्लैड इन अ साड़ी. यू कैन आल्सो ट्राई दिस. यू कांट इवन वॉक फास्ट. कैरी द चिल्ड्रन अलोंग. छोटे छोटे बच्चे जो डिपेंडेंस होता है घर में, उसको भी तो बचाना है, तो उसको भी गोद में लिया और दौड़ा सुनामी पानी में. तो बचाने के प्राइस में अपना जान गंवा दिया. Many did not know swimming because you never imparted life-saving skills to any woman, any girl in your family. कभी नहीं सोचा उसको सेल्फ डिफेंस के कोर्स में भेजूं, उसको स्विमिंग क्लासेस में भेजूं, उसका ताकत बढ़ाऊं, उसको प्रॉपर एजुकेशन दूं. Nothing you did, nothing you thought of. At the end, what happened? You see, unable to face the torment for a long time and let go of the support after some time. उनका बर्दाश्त करने का ताकत होता है हर एक इंसान का. तो उन्होंने फ्लड वाटर्स पे अपना को जान बचाने के लिए बहुत कोशिश किया. किसी चीज को पकड़ के रहा काफी समय तक, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, तो इट इज नॉट दैट इजी फॉर हर टू सस्टेन फॉर लॉन्ग. इट्स नॉट दैट इजी एज इट इज शोन इन फिल्म्स. यू नो, एक हीरो हेलीकॉप्टर से लटकता है, दूसरा हाथ से हीरोइन को पकड़ के सेव कर लेता है. इन रियल लाइफ इट इज नॉट दैट इजी. 2 मिनट भी कोई भी आदमी अपना वजन को कैरी नहीं कर सकते. किसी चीज से लटक रहा है, वो अपना वजन को कैरी नहीं कर सकते हैं 2 मिनट से अधिक. अंडर दैट पैनिक सिचुएशन यू लेट गो ऑफ द सपोर्ट ऑल्सो. द सेम हैपेंड टू वुमेन ऑल्सो हियर. कुछ चीज पकड़ के अपना जान बचा रही थी, लेकिन वो इतना तेज पानी हो गया है, उसको बर्दाश्त करने का ताकत घट गया है, तो फिर वो सपोर्ट छोड़ दिया अपने आप को, मतलब
पानी का हवाला कर दिया और वो मर गई सुनामी वाटर्स में। इवन छोटा सा चीज है, क्लॉथ्स रिप्ड अपार्ट, जो कपड़ा पहनी थी वो कपड़ा फट गया पानी की वजह से, पानी का बहाव की वजह से, स्पीड वेलोसिटी की वजह से। और कपड़ा फटने के बाद वो हिम्मत नहीं कर पाई, बिना कपड़े का मैं गांव में वापस कैसे जाऊं, अगर कोई मुझे देख लेगा तो मेरा ऊपर जुल्म करेगा या मेरे को बदनाम करेगा, कुछ भी करेगा। इनका माइंड में इस प्रकार का थिंकिंग हो गया है। विदाउट क्लोथ्स हाउ विल आई गो बैक टू माय विलेज, इट्स बेटर रैदर आई कमिट सुसाइड और डाई विद द वाटर्स। मैं मर जाऊंगा पानी का अंदर ही, क्यों मैं वापस जाऊंगा बिना कपड़ा का गांव में। तो दैट काइंड ऑफ स्मॉल सेंसिटिव थिंग्स made women more vulnerable than men because of social roles only, because of restrictions which we created. This is what the actual problems that exist in the society. Women at risk. If you see there's something wrong in a place, many have died, and happily married woman, her husband died in that accident. She has become a widow. After this status, how she is looked, perceived in the society, yeah, with some kind of bad influence would be definitely there on that widow by the local men. Women-headed households, after men die, women has to run the family. They have to earn, they have to feed, they have to do household tasks, again reproductive tasks. Young adolescents, for example, were left after the incident. Something went wrong. All the people of that family died. Only young girl, 18 to 20 years, is still alive. What can happen to that girl? Just imagine, in a country like India. Even in Western countries, so-called developed country, during Katrina hurricane, similarly, in one family, an adolescent girl was alive, the rest all in that family died, and she was forced to do prostitution. She was sent so-called drug trafficking. उसके साथ जुल्म हुआ, उसको प्रोस्टिट्यूशन करने पर मजबूर कर दिया गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ उसके साथ. So think of a village level girl, woman who is all alone. There's no one to support, no social fabric. Anything can happen to her. Woman who lost all the children. For suppose she's a happily married woman, a mother of 2-3 children, but suddenly with something went wrong in that village, earthquake, flood, whatever may be the incident, all the children died in that incident. She is only left, or her husband must be alive along with her. But that husband is no more interested in that woman anymore, because she lost the children. One thing, she has undergone tubectomy operation. She cannot give birth to children anymore. And the man is fond of children. He wants his waris ko continue karna chahta hai. But he found that this lady is of no use to me. I cannot get children anymore from her. So let me marry another woman. So she is neglected. So this is also one kind of risk happening with women. Married woman who has children, but children died and undergone tubectomy operation. Women belonging to underprivileged, which are not of good social status in this society. So they are from very small underprivileged communities. Then they are all obviously will be exploited very much. So this is where. So what I want to emphasize here is there is impact definitely on both the genders, but differential impact is observed more in the woman. Inadequate facilities to carry on household chores. When houses get collapsed, they were all taken to a temporary shelter where she has to manage with whatever facilities she has. She has to perform household tasks like cooking, feeding children. These are all common, regular duties of a woman. Increasing responsibility. If somebody is injured due to an incident, she has to take care of them, provide health, medicine,
extend care, etc. Sanitation facilities, safety and privacy for cleanliness, hygiene, toilets in relief camps. We don't get to see good toilets, good arrangements, poorly lit toilets. Pregnant and lactating women needs are different. They need high protein food that time because they have to offer milk to the infants. Cultural beliefs, restrict mobility. Parda system I discussed already. Afghanistan earthquake 1998. Women could not take help because of their restricted movement. They're not allowed to move out. They cannot access for information, no access for resources. Left out when loans are given to assist business. जब घर का कोई महिला रह गया, पुरुष मर गया, or somebody wants to help you and government wants to help, they never recognized women as the heads of the family, and they always wanted you bring your partner to get assistance. They were never given loans even. So these things happened. And these things are also, at times you got to see during crisis in temporary shelters. Most of the toilets in temporary shelters do not have roofs above them. ऊपर छत नहीं है, strong doors नहीं है, latches नहीं है बंद करने के लिए, adequate light नहीं है, water sufficient नहीं होती है, ventilators at an appropriate height to ensure privacy for women. How a girl can change clothes inside such toilets where there is a proper ventilator is not at certain height. Anybody can see everything from outside. Even those toilets, how any girl can go. The boys can go to at certain age, at least 5 to 6 years. So, and these toilets are to be kept away from meeting places of men's toilets, etc. Comfortable distance that way. Otherwise, lot of violence can happen in temporary shelters also. So usually temporary shelters are something like this you get to see. So we have to focus on everything. Increase in domestic violence. When men lose their jobs, their livelihood, while women continue working, can happen. So this man is not happy with that. He might, suspect or some kind of allegations on her and make it a point to beat her every time. Sexual harassment, red trafficking, it happened in Katrina, I said. Girl children drop out from school, everywhere it happens. Take children along on relief works. They are bound to take children because she is the only person who can take care of the children the best, not the male of the family. Deterioration of health, lack of food and nutrition. She doesn't get proper food, and that food she has to offer to children before eating herself. Restricted mobility prevents from taking early warnings and evacuation. Greatest stress. Perceived victims rather respond. They are responders. They are not helpless victims, but we treat them as helpless victims. Let us talk something about changing roles, because some crisis, there's no woman who can do household chores anymore. Then men has to perform. I would be focusing both now, because I had spoke more about women till now. Now I'll slowly get to men as well, because gender applies to both. When a single male is left in house to take care of children and cooking and cleaning of house, it is a change in traditional role of males. He was never expecting, he never learned how to perform household activities, but now he is forced to, because there's nobody to take care of the house activities. Similarly, a single woman-headed household sees women going out to work and earn. She is a single household head of the family now, because the partner is no more the male partner. So she has to go out, work, earn, and look after her family as well. Or if the female head of house is unable to go out, as she can't leave the kids unattended, she is not able to access services. Because she has small children, she cannot go so easily. She cannot take all the kids along with her. She cannot leave them at home and go for work, get some food for the family. So a lot of restrictions kind of things apply to her. The large number of healthcare workers in most of the countries are women. If you see, hospital nurse, when I asked you, you all might have thought that female had come first to your mind, because nurses usually we perceive as females. But why not male can do nursing job well? Yes, they do. They can. They are capable of. But we always see women as great
nursing workers. So here, a large number of healthcare workers in most of the countries are women. This is quite common. Disasters lead to a work-life conflict because when female nurses are required to be in hospitals, when all these nurses are in hospitals attending victims and all, for longer hours, the traditional gender roles assigned to them need to be taken care of by other members, often male members. मेरा वाइफ नर्स है, हॉस्पिटल में उसको सेवा की आवश्यकता है और ऊपर से कोविड जैसा सिचुएशन है, तो राउंड द क्लॉक उसको ऑफिस हॉस्पिटल में काम करना पड़ रहा है. तो मैं घर का मर्द हूं, घर का काम भी नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे अपने बच्चों को संभालूंगा, कैसे खाना पकाऊंगा, क्या खिलाऊंगा. तो ये आपको समझना जरूरी है. ये रोल्स जो है फीमेल सोशल रोल्स भी आपको निभाना पड़ सकता है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. चेंजिंग इन रोल कहते हैं इसको. सब ठीक ठाक तो अलग बात है, फीमेल बना के देती है, आप खाते हैं, बट सिचुएशन इज डिफरेंट. हर सर्विसेज आर नीडेड मोर आउटसाइड इन द हॉस्पिटल. Access to education is one example. You see, girls drop out from schools. I said 100 में से 65 बच्चा withdraw कर लेते हैं. Several reasons है. Adolescent age में menstrual cycle शुरू होता है और स्कूल में sanitation facilities बहुत गंभीर है. No proper water in the toilets. How any father can send her daughter to such a school? Rather, I'll ask her to sit at home, don't go to school, look after your siblings. I can do that as a father. But that shouldn't be the case. She should learn, she should excel, she should gain skills, she should stand on her own legs tomorrow. So when school buildings are damaged and children need to travel longer distances, which are not very safe, girls are mostly kept at home. यही होता है विलेज में. Increase instances of early marriage. जल्दी शादी करा देंगे, ये सोचते हैं ताकि बोझ उतर जाए. When schools are functioning in temporary shelter space with no sanitary facilities, girls miss the school during menstruation. जो भी पीरियड होता है, साइकिल होता है, उस समय पे स्कूल जाना पसंद ही नहीं करेंगे because no proper sanitation in the schools. Less females volunteering to teach. ऊपर से फीमेल टीचर्स भी नहीं है. अगर कुछ भी परेशानी है तो किसको बोले है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. High teenage pregnancy in IDPs, internally displaced persons, जो देश के अंदर एक राज्य से दूसरा राज्य, एक जिला से दूसरा जिला, एक गांव से दूसरा गांव चले जाता है माइग्रेट होके हम लोग इन केस ऑफ इमरजेंसी. तो उस स्थिति में इस प्रकार का हाई टीनेज प्रेगनेंसी भी हो सकता है. महिला शिकार हो सकती है, जुल्म हो सकता है. गर्ल्स विद इन्फेंट्स कैन नॉट गो टू स्कूल. अब प्रेगनेंसी हो गया, बच्चा आ गया, तो स्कूल कैसे जाएगी? वो छोटी बच्ची ऑलरेडी 12 साल 13 साल की है, उसके साथ इस तरह हो गया है, प्रेगनेंसी आ गया है, तो हाउ डिलीवरी भी हो गया, बच्चों को लेके क्या पढ़ाई करेंगे वो? लेसर रिसोर्सेज. पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड ऑन फी फॉर बॉयज. बॉयज के ऊपर हम फी भरने के लिए सक्षम है, लेकिन गर्ल का फीस भरने की बात आता है तो वी डोंट वांट टू. लेट हर बी एट होम, डोंट गो टू स्कूल, और सिचुएशन इज वेरी टाइट, आई कैन नॉट अफोर्ड करके घर का मालिक खुद उसको मजबूर कर देते घर में रहने के लिए. Damage of schools and setting up of temporary schools far away also impact boys. लड़कों को भी दिक्कत होती है, लड़की को ही नहीं. स्कूल सही नहीं है और टेम्पररी स्कूल जो भी बनाया वो बहुत दूर है, तो बच्चा भी दिक्कत, मतलब लड़का भी दिक्कत में आ सकते हैं. Boys are also at risk of abduction if they have to travel long distance alone. अकेला जाना, किसी लड़का को, छोटा लड़का है, यंग लड़का है और 6-7 साल का है, तो उसको भी abduction हो सकता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसके साथ भी हो सकता है. When parents are unable to pay school fee, boys start to engage in some work to earn money and to meet their fee requirements. Boys जो है इस प्रकार का भी करने लगता है, मतलब पेरेंट्स भर नहीं पा रहा है, सिचुएशन टाइट है, जॉब नहीं है उस घर का हेड का, तो बॉयज स्टार्ट टू एंगेज इन सम वर्क. कुछ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर फी भरेंगे, तभी उसका शिक्षा कंटिन्यू हो सकता है. Look at safety and security for both the genders now. Due to a number of factors, women and girls in a post-disaster situation are at increased risk of sexual violence. ये तो पूरा वर्ल्ड रिपोर्ट्स कहती है, सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हो जाता है महिला और लड़कियां. In a displaced setting, when women and girls go out to collect water or firewood
or for defecation, they are exposed to risk of sexual violence. आपने सुना होगा, कई इधर उधर पढ़े भी होंगे न्यूज़ वगैरह, किसी महिला को एबडक्ट कर लिया गांव में आधी रात में। जब वो गांव में नॉर्मली क्या होता है, एक परंपरा जैसे टॉयलेट्स नहीं रहता था, अभी तो घर घर में टॉयलेट बन गया, वो अलग बात है। पहले इस तरह इंस्टेंसेस भी देखने को मिलता था, जो टॉयलेट करने बाहर जाती है महिला रात में लाइट लेके, व्हाटएवर, टॉर्च लेके, उसको भी एबडक्ट करता था। और फ्लड वाटर्स में मान लीजिए सुबह का टाइम में महिला जा नहीं पाती टॉयलेट पे, तो रात का वेट करती है, उस रात में बारिश का पानी में भी उसको टॉयलेट करने कहीं जाना पड़ता, तो उस वक्त भी उसका साथ वायलेंस भी हुआ। और इवन जो सांप वगैरह निकलते हैं पानी में फ्लड वाटर्स में, वो काटने की वजह से भी महिला मर गई। हाउ अनसेफ शी इज। there is a risk of sexual violence. Unsafe shelters, limited privacy, ये already हमने discuss किया. Dependence on external people like aid workers is increased. They may demand for sexual favors, in fact favors, not flavors, in exchange of their relief assistance. Somebody says, मैं आपके लिए ये दिला दूंगा, सरकार की तरफ से कुछ राहत मिला है, वो हम आपको दिला देंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ सोएंगे। इस प्रकार का सेक्सुअल फेवर एक्सचेंज करते हैं, because they are in need, they want some assistance, and besides providing assistance, you are asking for sexual favor. So this is something very annoying and should not prevail in this society. Increased instances of spread of HIV transmission as communities are not able to observe standard precautions. Precautions are there to avoid sexually transmitted diseases, HIV transmission, etc., but nobody pays attention to it. And unwanted sex resulting in pregnancies results in crude ways of abortion, which often leads to death of women due to sepsis infections. Unwanted sex हो गया गलती से और abortion करना चाहते हैं, it was not done properly, no institutional delivery even, जैसे मर्जी कर दिया तो महिला भी मर सकती है, बच्चे भी मर सकता है. So this kind of problem is there. Women's anatomy also puts them at greater risk of HIV compared to men. ये जो HIV वायरस है वो महिला के एनाटॉमी में कुछ ज्यादा ही नुकसानदायक साबित हुआ है. पुरुष को इतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता जितना महिला को इफेक्ट होती है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट की वजह से. How about male now? Sexual violence against men and boys is a reality in armed conflicts but highly underreported. आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे का लड़ते हैं बंदूक लेके, उस स्थिति में लड़का लोग के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस होता है. आपने फिल्म्स में भी देखे होंगे. Both men and boys are vulnerable in war zones, in detention, and in military operations in civilian areas also. So the boys are additionally vulnerable in refugee camps. Young boys, छोटा boys, उन लोगों के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस होता है, अब्यूज होता है. हेल्थ भी हम बात करेंगे. According to a report of UNFPA, during Syrian crisis, many women lost their children as they could not afford the cost of neonatal care. बच्चा छोटा है, उसका केयर करना उस स्थिति में संभावना ठीक से नहीं बन रहा था, तो मजबूरन बच्चों को गंवाना पड़ा. Women have been found to be more vulnerable to heat waves. गर्मी कुछ ज्यादा महिला को मारती है. ये थोड़ा रिपोर्ट्स है हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास. The number of women who died during the Indian Ocean tsunami compared to death of men tells us that women and girls are at least 3 or more times at risk of death due to disasters than men. ये हमने ऑलरेडी देख लिया सुनामी एग्जांपल में. 73% against 27% of men. 20. So men की बात करेंगे. There is evidence that men have reported much higher number of heart attack and stress than women. मर्द को कुछ ज्यादा ही दिल का बीमारी, हार्ट अटैक बोलते हैं ना, अटैक होना, कार्डियो अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, ये ज्यादा देखने को मिला है महिला से. When livelihoods are lost, men are under tremendous psychological pressure and stress if they are unable to provide food and meet basic needs of the family. वो लोग क्या समझते हैं, मेन को ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली, तो उनको जॉब नहीं है और कैसे परिवार को खाना खिलाए, कैसा जरूरत पूरा करे परिवार का, यही सोच के साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं.
Somali men aim to have raganimo, a term that roughly translates to manhood. ये जो term आप देख रहे हैं, from childhood they are taught to behave in manly manner, that is to act fearless and brave when someone attempts to humiliate him, capable and should never cry. मर्द है तो डरना नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है, ये सब बोलते हैं ना, वैसे सिस्टम दुनिया में हर जगह है, सोमाली में भी है. They are not allowed to cry even though they are not happy, they cannot express even. So such kind of cultural norms are prevailing in our society. Following a disaster, men go through trauma and fear but are not able to express as it would against manhood. मतलब आप रो रहे हैं तो आपको मर्द नहीं कहला जाएगा, अरे लड़की की तरह रो रहे हैं, ये बकवास आदमी, ये क्या कर पाएगा, करके ह्यूमिलेट करेंगे उसको. So these things prevail in society even now. Food security and nutrition की बात करेंगे. Women and girls end up reducing their food intake to meet the food requirements of male members of the family. घर पे लड़का है, पापा है, हस्बैंड है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है. मतलब उनको बाहर जाते हैं तो ज्यादा उसको फूड इनटेक होनी चाहिए, हम तो घर में है, पानी पी के भी मैनेज कर लेंगे करके खाना उन लोग को ज्यादा दे देते हैं मर्द को, और लड़की लोग को, महिला लोग को कम बच जाता है. Pregnant and lactating women are affected disproportionately because of their nutritional needs. उनको न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता है उस वक्त, लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट जब होते हैं, लेकिन उस वक्त तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो तरह तरह का बीमारी होगा, अनीमिया का शिकार भी हो सकता है. Infants suffer when women stop breastfeeding due to lack of privacy in IDP camps or public shelters. महिला अपना बच्चों को दूध नहीं दे पा रही है क्योंकि कैंप्स में प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है. जहां इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस को रखा जाता है वहां पर्दा नहीं है, एक फैमिली दूसरा फैमिली को भी मतलब कुछ ये गैप नहीं है, सब चीज सब देख लेंगे, आप क्या कर रहे हो पड़ोस देख लेगा. तो इसी वजह से वो समय पे दूध भी नहीं दे पाती इन्फेंट्स को. तो ये इन्फेंट्स को तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है. Single men and boys separated from families are also at risk. जो boys और मर्द होते हैं जो separate हो गए अपना परिवार से, are risk of undernutrition because they have traditionally not been involved in food processing, conservation, storage, and may not have cooking skills. They don't know how to cook food, how to process, how to conserve, how to store. कभी देखा नहीं, घर में सब कुछ वाइफ कर रही है, मम्मी कर रही है, तो रिलैक्स हो जाता है ना, उसको सीखना की जरूरत नहीं समझता है. लेकिन खाना बनाता कैसे, रखा कैसे जाता है, खराब ना हो और न्यूट्रिशन आपको डिमांड मीट होता रहे, उसके लिए कितना खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, इतना तक आइडिया नहीं रहता है लड़कों में. तो इस वजह से वो परेशान हो सकते हैं, उसका न्यूट्रिशन लेवल्स कम हो सकता है. ओके, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर ऑपरेशन, इतना हमने बात किया. अब थोड़ा हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग को दूर करना पड़ेगा. मतलब सोसाइटल रोल्स मर्द के लिए बनी है, महिला के लिए बनी है, और वही रोल्स में उसी टास्क उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बांध लिया हर एक जेंडर को. प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से प्रेजुडिसेस जाने अनजाने में हुआ. आप ही का घर पे सोचिए, आप नहीं चाहते बेटी को अलग ट्रीटमेंट दे, बेटे को अलग ट्रीटमेंट दे, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए आप सोचते होंगे, लेकिन जाने अनजाने में हो भी सकते हैं आपके साथ, बिकॉज अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपका माइंड में ऐसा कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चलते हैं आप. प्रेजुडिसेस मतलब लड़की जन्म लिया तो गुड़िया खरीद के दे दिया, लड़का है तो क्रिकेट बॉल बैट बाहर खेलने के लिए अपने छोड़ दिया, और बहुत सारा चीज है आपको करने की, जानबूझ के करने की आवश्यकता भी नहीं है. लड़का खुद देखते देखते समझ भी लेते हैं. घर का कोई छोटा बच्चा नवजात शिशु आता है घर पे, वो भी तो चीजें देखते रहते हैं, समझने लगता है, परसीव करने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, घर में एक छोटा बच्चा आया है और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मम्मी हमेशा किचन में कुछ ना कुछ करते रहती है, और जब भी मुझे भूख लगा तो मुझे खाना देती है मैं रोने पर, और मुझे नहलाती है, मुझे अच्छे से कपड़ा पहनाती है. पापा तो सुबह आते हैं, हमसे प्यार करते हैं, फिर झोला लेके कहीं निकल जाते हैं, शाम को फिर आता है, फिर हमको सैर कराता है, फिर थोड़ा आधा घंटा मेरे साथ स्पेंड करता है सोने से पहले. ऐसा उसका अंदर कुछ रिकॉर्ड हो जाते हैं.
ये तो आप बता नहीं रहे उसको ऐसा ट्रीट करना वैसा ट्रीट करना, लेकिन वो समझने लगता है जेंडर रोल्स। खास करके मम्मी मतलब अवेलेबल किचन में 24 घंटा देखने को मिलती है, पापा मतलब आधा दिन कहीं और रहता है, आधा दिन घर पे देखता है, ये करते हैं वो करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे रजिस्टर इन देयर माइंड्स। सो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होता है, हर एक समाज में होता है, उसको दूर करना है। स्टीरियोटाइप थिंकिंग की वजह से हम लोग दूसरा जेंडर को अप्रेस नहीं करना है। Gender oppression refers to one gender dominating the other unjustly or even cruelly, whether this happens deliberately or not. आप deliberately कर नहीं रहे लेकिन हो जा रहे हैं। महिला को सुरक्षित रखना चाहते इसलिए आप गहना सजाया, साड़ी पहनाया, घूंघट में रखा गांव में, लेकिन वही साड़ी वही गहना उसको जान लेके चले गया सुनामी में। आपने देखा गहना फंस गया, गहना का बचाने के चक्कर में अपना जान भी गंवा दिया होगा, और बच्चों को बचाने के चक्कर में अपना जान गंवा दिया होगा, और साड़ी पहनने की वजह से तैर नहीं पाई, चल नहीं पाई, दौड़ नहीं पाई, स्विमिंग आता है तब भी अपना जान नहीं बचा पाई, और कपड़ा फटने की वजह से मर गया, ये भी हमने देखा है। सो डिलिबरेटली आप नहीं सोच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो जा रहे हैं। सो हो जा रहा मतलब एक जेंडर दूसरा जेंडर से इंफीरियर होते जा रहे हैं। तो दोनों जेंडर को हम बराबर लाने की बात कर रहे हैं जेंडर सब्जेक्ट में। इट्स अ क्रॉस कटिंग डिसिप्लिन। Why one should go down, the other should go up? Why not they come together? That is the main idea of this subject. So this is a typical Indian mentality. एक गांव का आदमी है और उसका 2 बच्चा है, बेटा बेटी, कि चारों तरफ पानी आप देख रहे हैं, फ्लड वाटर्स, और दोनों को बचा रहे, साथ साथ अपना जान को भी बचाना है। तो ये आदमी ने क्या किया होगा? आफ्टर सम टाइम ही इज अनेबल टू फेस द टॉर्मेंट ऑफ द वाटर। पानी का बहाव में वो अपने आप को खड़ा नहीं हो पा रहा और दोनों को उठा नहीं पा रहे हैं, और कुछ समय के बाद ताकत घट जाता है। तो इस केस में कुछ समय के बाद उसको लगता है दोनों बारी हो रहा है, मैं एक ही को बचा सकता हूँ, तो किसको वो छोड़ेगा? गांव का आदमी की हम बात कर रहे हैं, दोनों को बचाने का स्थिति नहीं रहा वहां। तो उनको लगा अरे लड़की को मैं बड़ा पाल पोस के बड़ा करके क्या फायदा, मुझे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, मैं खर्ची होगा और कुछ नहीं होगा, वो दूसरा घर चले जाएगी, लड़का है तो मुझे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो उसको मैं बचाऊंगा, लड़की को मैं डुबा दूंगा, क्योंकि लड़की को छोड़ दिया और लड़के को बचा लिया। ये टिपिकल इंडियन विलेज मेंटालिटी की हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट लाइक दैट ऑफ कोर्स, बट दिस थिंकिंग स्टिल प्रिवेल्स। लड़की मतलब माइनस, लड़का मतलब प्लस। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, लड़की क्या कर सकती है और एक महिला क्या कर सकती है। महिला को किस किस रूप में हम देखना चाहते हैं। देखिए महिला, और फोटो में देखिए आप, 10 हाथ है उसका, काली माँ की तरह, और हर काम करे, घर का जानवर को चारा भी खिलाए, घर को साफ भी करे, खेती बाड़ी में काम भी करे, गाय भैंस से दूध भी निकाले, और सबको खाना बना के खिलाए, बूढ़ों को बुजुर्ग को दवा दारू खिलाए, देखिए, और आदमी का बात भी सुने, बच्चों को भी ख्याल रखे। देखिए कितना सारा टास्क है। एक फोटो में आपने ध्यान दिया होगा टॉप राइट कॉर्नर में। तो ये एक छोटा सा महिला की बात करते हैं, एक सेक्टर की बात करते हैं। मैं एक ही सेक्टर ले रहा हूँ, ज्यादा सेक्टर नहीं ले रहा हूँ, हर सेक्टर का यही हाल है। एग्रीकल्चर इज द प्राइम सोर्स ऑफ वुमेन्स लाइवलीहुड। 65% महिला खेती बाड़ी में काम करती है। सोचिए, खेत आपका है, आपने खरीदा, लेकिन आपका घर का महिला को भी उसमें काम में लगा दिया आपने, उसके लिए पैसे भी नहीं देते होंगे आप। Women, backbone of agriculture workforce, 43%. Women lag behind men in access to and control over agri production resources. Control भी नहीं है, access भी नहीं है। Women ownership of land कितना है? Developing countries में 2%. We come under developing country only. 20% in developed country. वहां भी स्थिति गंभीर है, 50% नहीं है, 20 है। India 11%, 3% ओडिशा। Women farmers, invisible face of Indian agriculture. इतना मेहनत करता है खेत में, कोई नहीं करता है जितना महिला करती है। कोई इनविजिबल है, दिखता नहीं है किसी को। आप देखिएगा, वुमेन्स हैंड इज, कितना मेहनत करता है खेत में। ए फीमेल वर्कर यूजेस हर फिंगर टिप्स, फिंगर का टिप्स होता है ना, ऑन एन एवरेज 522 बार, और फिंगर नेल्स 144 बार, एंड हर पाम्स 55 बार for every single kilogram of grain she produces. अपना मकाई देख रहे हैं ना, मकाई को खोलने के लिए नाखून लगता है, हाथ लगता है, फिंगर टिप्स लगता है। मेहनत की हम बात कर रहे हैं, इनविजिबल वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, कितना बार लगता है।
to produce 1 kilogram of grain. सोचिए, in the developed world, this work is usually done by machines. खेती बाड़ी की हम बात कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होती है कहाँ? विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन इंडिया में हम लोग आज भी खेत में आदमी को बुला के या महिला को बुला के ट्रांसप्लांट कराता है, वो भी हाथ से। Much of the labor is done by hand only. She has to put her fingers 1.2 lakh times into puddled field to transplant 1 acre of land. 1 एकड़ लैंड जमीन में आप उनको अपना उंगली लगाना पड़ेगा कितना बार? 1.2 लाख टाइम्स। 1 एकड़ में अगर ट्रांसप्लांट करना है तो ऑलमोस्ट 1.25 लाख बार उसको हाथ मिट्टी में घुसाना पड़ेगा, उंगली घुसाना पड़ेगा। She needs to beat 33,000 times to thresh 1 acre of paddy. 1 एकड़ पैडी जो निकलता है खेत से, उसको बीट करके अलग करने के लिए जो धान 33,000 टाइम्स मारना पड़ता है। कितना एनर्जी लगता है, कितना ताकत लगता है, जस्ट इमेजिन। इस तरह बहुत सारे एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में आप देखेंगे, पोल्ट्री, फिश केयरिंग, मशरूम कल्टिवेशन, some bamboo works, some utensil cleaning, fuel collection, transport, vegetable growing, fodder collection, सारा एक्टिविटीज में आप महिला को देखते होंगे। कितना काम करती है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल वर्कफोर्स किसी को दिखता नहीं है। द प्रोडक्टिव रोल, द रिप्रोडक्टिव रोल, द कम्युनिटी मैनेजमेंट रोल, कोई भी काम उसको दिखता नहीं है। वुमेन स्पेंड 291 minutes a day and men केवल 32 minutes a day towards unpaid activities in rural areas. ग्रामीण क्षेत्र में अनपेड, जहां पैसा मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है, वहां महिला ज्यादा योगदान दे रही है। 291 minutes a day, men कम। While 312 minutes a day and men 29 minutes a day towards unpaid activities in urban areas. हर जगह यही हाल है, मेहनत ज्यादा करा रहे और पैसा कम दे रहे महिला को खास करके। इसीलिए स्कीम्स में बहुत बदलाव ला रही है आजकल सरकार। इन इंडिया इट इज 3.1%, क्लोज टू 5.91 लाख करोड़ ऑफ द कंट्रीज जीडीपी महिला का वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट कर रही है, ₹190 लाख करोड़। तो चैलेंजेस ऑफ फॉरेन वुमेन की हम बात करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग आपने देखा, मेन को मोर कैपेबल समझता है महिला से ज्यादा। मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली, तो आपने देख लिया। लेकिन जब चोट लगता है, खतरा बना रहती है, हजार्ड्स होता है, महिला को भी लगता है। हाथ में काम करते हुए चोट लग जाता है, खाना बनाते वक्त उंगली जल जाता है, कुछ भी हो सकता है। बॉयज आर मोर प्रिविलेज्ड देन गर्ल्स। बॉयज को आप स्कूल भेज देंगे, लड़की को बोलेंगे, गांव का लड़की को, तू चारा खिला के आ जाओ जानवर को करके, बकरी वगैरह, बैल बकरी दे देंगे, इस तरह। तो वुमेन लेबरर्स आप देखिएगा, इनका साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। डेप्रिवेशन फ्रॉम हेल्थ सर्विसेज, स्वस्थ नहीं मिलता है, लो वेज रेट मिलता है, पुरुष से कम पैसा मिलता है, माल न्यूट्रिशन भी होते हैं खाने का मामले में, अंडर न्यूट्रिशन, लिमिटेड राइट ओवर फैमिली रिसोर्सेज, फैमिली का कोई भी रिसोर्स है उसमें इसका लिमिटेड राइट, हक नहीं बनता है। ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस वर्क इज ए चैलेंज। इनसिक्योरिटी वर्क प्लेस, जहां जा रही है काम करने वहां इनसिक्योरिटी होगा, कोई लैंडलॉर्ड होगा उसको गलत नजर से देखता होगा, कुछ और वायलेंस का शिकार भी बन सकती है, फिजिकल ड्रजरी होगा उसके साथ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय लैंड ओनर्स, एक्सप्लॉयटेशन, लेस रिस्क ड्यूरिंग प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। जो गर्भवती होती है, बच्चा जन्म देती है, उसके बाद वो काम करने का 100% दे नहीं पाएगी, थोड़ा रेस्ट, आराम की जरूरत है, लेकिन रेस्ट करने नहीं देंगे आप। हेल्थ हजार्ड्स भी बनी रहेगी, लेस टाइम फॉर चाइल्ड केयर होगा, बर्डन ऑफ फीडिंग एंड नर्चरिंग दी चिल्ड्रन, ये एक्स्ट्रा बर्डन है उसके लिए ना। काम भी करो और बच्चों को भी देखभाल करो और दूध भी पिलाओ, और ऊपर से आपका वो पालना का व्यवस्था नहीं है, सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है वर्क प्लेस में, तरह तरह का समस्या है। एजुकेशन में भी डिप्राइवेशन मिलती है और ड्रजरी, मेंटल अगनी बहुत है। वुमेन परफॉर्म 66% ऑफ वर्ल्ड्स वर्क। जिस प्रपंच में, देश में, वर्ल्ड में, अब धरती में कहिए, 66% वर्क महिला का ही होती है। और प्रोड्यूस 50% ऑफ फूड, खाना जो प्रोड्यूस करते हैं 50% महिला ही प्रोड्यूस करती है। एंड अर्न 10% ऑफ वर्ल्ड इनकम। अब इनकम की बात करेंगे, 10% महिला ही कमा रही है वर्ल्ड में।
but own 1% property. प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 1% उसका नाम से हो रहा है, बस 50% भी नहीं हो रहा है. और लैंड, वाटर, लाइफ स्टॉक, एक्सचेंज सर्विसेज, अनइक्वल एक्सेस, मतलब इस सब जगह उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है. क्रेडिट बैंक लोन देते वक्त उसको नहीं देगा. आजकल तो थोड़ा अच्छा सिस्टम आ गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का तहत माइक्रो फाइनेंसिंग हो रहा है. दैट्स गुड. ये बिहार में भी देखिएगा आजीविका करके, साउथ में भी है कुछ एसएचजी नेटवर्क. दे आर डूइंग गुड जॉब नाउ, बट इनिशियली दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स. टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, इनपुट नहीं मिलता है, लैंड का ऊपर आपका राइट नहीं है, लाइफ स्टॉक का ऊपर भी आप कुछ नहीं, एक्सचेंजेस कुछ भी नहीं. सो सम काइंड ऑफ unequal access to these resources still prevail in the society. There is a gender gap. अगर आप इक्वल एक्सेस दे देंगे, मतलब जो रिसोर्स आप मर्द को दे रहे हैं वही रिसोर्स फीमेल को भी देंगे, सेम एक्सेस of women to productive resources as men can boost yield by 20 to 30%. अगर आप सेम रिसोर्स जो पुरुष को दे रहे हैं वही महिला को देंगे तो 20 से 30% आपका yield में बूस्ट होगा. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी by 2.5 to 4% होगा, and lessen the number of hungry people in the world by 12 to 17%. 12 से 17% भूखे रहने वालों को खाना दे पाएगी महिला. कम होगा उतना, जो भूखमरी है उस भूखमरी से 12 से 17% कम कर देगी महिला अगर आप सेम एक्सेस देंगे. सोचिए कितना बड़ी बात हो गया. सो यू कैनॉट बी जेंडर ब्लाइंड. मतलब इतना ताकतवर है महिला और आप उसको इग्नोर करके, नजरअंदाज करके, ब्लाइंड होके पॉलिसी बनाएंगे तो क्या काम का वो. So gender blind is an approach that does not recognize that there may be differences in situation, needs, feelings, interests, etc. of men, women, girls and boys. सबका नेसेसिटी अलग, सबका फीलिंग्स अलग, सबका सिचुएशन अलग, सबका इंटरेस्ट अलग, और आप समझ रहा सब बराबर है. जैसे पहले एक एग्जांपल लिया था ना मैंने, रोड बनाएंगे, महिला भी चलाएगा, पुरुष भी चलेगा, लड़का भी चलेगा, लड़की भी चलेगा, लेकिन is that improving the facility in that village, or is it addressing the problems that women of that village face? Like drinking water supply is a very big problem in that village. Most of the women in the village are expected to bring potable drinking water to their families. What if we don't give proper road to that place where she gets water? So this kind of things are to be addressed, because their needs are different, the situation is different, their interests are different. How can you treat both the genders as a homogeneous group? It is never homogeneous, heterogeneous, completely heterogeneity is there. So gender neutral is an approach to planning that treats women, men, girls and boys as if they are part of one homogeneity. It's never. So you cannot be gender neutral, you cannot be gender blind. सड़क बनाना जेंडर न्यूट्रल हो गया ना, इट इज नॉट जेंडर सेंसिटिव, जेंडर न्यूट्रल हो गया. So you cannot go with such strategies of gender blind and gender neutral. Okay, now you got it. So gender equality की हम बात करते हैं, equity भी समझता है क्या है. Formal equality regards women and men as being the same and therefore sets out to treat women as the same as men. महिला और पुरुष एक नहीं है, सबको जरूरतें अलग है. लड़का लड़की एक नहीं है, उसका जरूरत, एडोलेसेंट गर्ल का जरूरत अलग हो सकता है. सैनिटरी नैपकिन देना पड़ेगा आपको समय पे, वो उसको जरूरत है, लड़के को तो जरूरत नहीं है. सो डिफरेंशियल नीड्स आर ऑलवेज देयर. ये कहानी आपको पता होगा, स्वैन एंड फॉक्स एक दूसरे को खाने में आमंत्रित करते हैं. फॉक्स थोड़ा कनिंग है, उसको लगता है मैं स्वैन का साथ मजा करूंगा और उसको मैं थोड़ा सा परेशान करूंगा, अपने घर बुलाऊंगा और खाना में ऐसा शैलो वेसल में खाना ऑफर करूंगा. शैलो वेसल होता है, खाना ऑफर करूंगा. तो स्वैन का चूंच बहुत लंबा होता है, बीक इज वेरी लॉन्ग एंड शार्प, इट कैनॉट ग्रैब फूड फ्रॉम शैलो वेसल्स. बट फॉक्स का जानबूझ के उसका साथ प्रैंक करना था, मतलब मैं बुलाऊंगा, वो खा भी नहीं पाएगी और मेरा खाना भी बच जाएगा और मैं बुला लिया करके वो भी खुश हो जाएगी.
कैसे खुश हो जाएगा? कोई मेहमान को बुला रहा है और खाना ढंग का दे नहीं रहा है, वो खाने लायक भी नहीं दे रहा है, उसको चीज पसंद नहीं है और वो वही दे रहा है, तो कैसे कोई एंजॉय करेगा? तो सेम इज द केस हियर। फॉक्स ने ऐसा घर बुला के स्वैन को शैलो वेसल में खाना ऑफर किया और वो खा नहीं पाई। एट द एंड ऑफ द डे डिनर होने के बाद, ठीक है आपको मैंने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, आई होप यू हैड वंडरफुल फूड विथ मी, ओके बाय बाय टाटा गुड नाइट करके स्वैन को भगा दिया और मन ही मन खुश हो रहा था। जस्ट लाइक दैट जेंटलमैन ऑन द रोड वाज वेरी हैप्पी सेइंग डायन विच टू दैट लेडी क्रॉसिंग दैट रोड इन द फर्स्ट केस स्टडी। सो स्वैन को लगा, बुरा लगा, अरे ये तो घर बुलाया लेकिन खाना कहाँ खाने दिया, ऐसा वेसल में खाना दिया, मैं खा नहीं पाया, चलो मैं टिट फॉर टैट करता हूँ, उसको भी सबक सिखाता हूँ, उसको भी मेरे घर बुलाऊंगा, एक खाना ऑफर करूंगा, लेकिन वो खा नहीं पाएगी, ऐसा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, डीपर वेसल में खाना ऑफर किया। तो फॉक्स कुड नॉट पुट इट्स माउथ टू ईट फूड फ्रॉम अ डीपर वेसल, तो swan could able to happily eat that food because of its long beak. So swan was happy, fox was not happy. So tit for tat की तरह वो सोचा। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, महिला को मैं स्कीम का नाम से कुछ बोल दूंगा लेकिन दूंगा कुछ नहीं, ऐसा कैसा होगा? We should think about their needs, necessities, feelings, accordingly should provide relief. तो जेंडर इक्वालिटी इक्विटी भी यही बात करती है। इफ यू सी इक्वालिटी मतलब सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स इज प्रोवाइडेड टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। आपने देखा नीचे कोई वॉलीबॉल मैच या फुटबॉल मैच व्हाटएवर मैच देख रहे हैं और तीनों को बराबर का आपने सुविधा दिया है, रिसोर्स दिया है, तीनों खड़ा है लेकिन वो बच्ची जो है वो देख नहीं पा रही। मतलब ये सही है? कहने के लिए सही है, यस, हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया है, तीनों को बराबर हमने समझा, लेकिन दे आर नॉट बराबर, दे आर नॉट फ्रॉम वन होमोजेनियस ग्रुप, दे आर डिफरेंट, देयर नीड्स आर डिफरेंट। तो आप क्या करते हैं? आप इक्विटी की बात करते हैं, मतलब यस, दोज वो डिजर्व मोर आई विल गिव देम मोर, जिसका जरूरत ज्यादा नहीं उसको कम दूंगा, तब काम बनेगा। हाँ बना तो है, आपने देखा पिक्चर में, तो रिसोर्स ज्यादा मिल गया तो बच्ची ऊपर से मैच बढ़िया से देख पा रही, पहले नहीं देख पा रही थी, अब ज्यादा देख पा रही। महिला को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था पहले, अब और आराम से देख रही थी। दिक्कत तो नहीं है, महिला को पहले से रिसोर्स मिला हुआ है। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। व्हाट इज जस्टिस? ये जस्टिस, हमको जेंडर जस्टिस देना है, ऐसा चीज बना दिया है जिससे सभी एक्सेस कर सकते हैं, सभी देख सकते हैं, छोटा बड़ा, महिला पुरुष, बच्चा बुजुर्ग सब। So this should be ensured, gender justice, this is what required. Equality doesn't mean justice. Now you got it? Equality justice नहीं होता है। इक्वालिटी में सबको बराबर मिलता है अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स, बट जस्टिस में जिसको ज्यादा मिलना चाहिए वो मिलता, वो भी देख पाता, वो भी एक्सेस कर पाता रिसोर्स को, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। Okay, I hope you got it. Okay, next, before disaster, some examples I'll take. Capacities of women overlooked and underused. महिला बहुत काम कर सकती है लेकिन हमने overlook किया, underuse किया। Like she can prepare food very well in the family, but what you have done, you made her cook for your own family, to you, to your children, to your elders, to your joint family members, whoever, but you did not allow her to go to master chef competition, get some prize, earn title, whatever, and become famous. अपने अलाउ ही नहीं किया, घर पे बैठा दिया, घर पे खाना बनाओ, मैं ही खाऊंगा, बताऊंगा कैसे है। वो गाना अच्छा गा सकती है लेकिन इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म में आपने जाने नहीं दिया ताकि उसका टैलेंट बाहर लोग देखे, अप्रिशिएट करे, उसको रिकॉग्निशन मिले, वो भी समाज में एक अच्छा इज्जत के साथ जिए, वैसा सोचा नहीं आप। Women are always seen as helpless victims. Always you have over expectation from men. लड़का है तो मेरा बुढ़ापे में काम आएगा, उसको मैं ज्यादा अच्छा परवरिश करूंगा, अच्छा स्कूल में एडमिशन दूंगा, इस प्रकार का गलत सोच में हम जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। Unequal representation of men and women in planning and decision making. जहां महिला पुरुष को इन्वॉल्व करना चाहिए वहां पूरा नंबर में इन्वॉल्व नहीं करते आप। कोई कमेटी बना है, 10 में से कम 5-6 लोग तो महिला रखो,
5 रखो या एट द मोस्ट 33% का नाम से 3-4 भी रखो तब भी चलेगा, एटलीस्ट वी कैन हियर देम। कोई भी कमिटी बनती है, महिला का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमेशा रखिए इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, पार्लियामेंट से लेके गांव का कमिटी तक, तभी उस गांव का विकास होगा, उस देश का विकास होगा। During disasters, minimal access to early warning system, as I told you earlier, they are not allowed to move, take information from any, कोई access नहीं है। Cultural and social practices restrict movement, पर्दा कल्चर की वजह से किसी के साथ जाना नहीं है, बात नहीं करना, इस प्रकार का आपने बांध लिया। Responsibility of dependents enhances risk, छोटा बच्चों को भी बचाना उस घर में, महिला के ऊपर बोझ हो गया, बच्चों को बचाने के लिए प्रयास किया, अपना जान भी गंवा दिया। Less likely than men to have life saving skills, हमने बता दिया इसके बारे में। लाइफ सेविंग स्किल्स पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसको सिखाया है नहीं। नीड पर प्राइवेसी नॉट कंसिडर्ड, जो प्राइवेसी मिलना चाहिए महिला को मिला नहीं है, सेपरेट वॉशरूम नहीं है, 100 फैमिली के साथ एक ही जगह शेल्टर्स में आपने छोड़ दिया, उनके लिए आपने कुछ सुविधा नहीं रखा। टॉयलेट्स भी आपने देखा कैसे कैसे टॉयलेट्स थे पहले। सेफ स्पेसेस इन टेम्परेरी शेल्टर्स नहीं है। इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केयरिंग फॉर डिपेंडेंट्स, इनको ऊपर बहुत जिम्मेदारी है अपने डिपेंडेंट्स को ध्यान देना, केयर देना, दवाई दारू खिलाना, खाना भी लेके खिलाना पका के, ऑल दिस थिंग्स आर एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हर। डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू रिलीफ एंड रिकवरी, जब एक्सेस की बात आती है, रिलीफ लेने की बात आती है, वहां डिस्पैरिटी है। एयर ड्रॉपिंग में आपने देखा महिला कैन नॉट गो एंड टेक हर शेयर सो इजीली इन दैट सिचुएशन, or even while distributing also you're not giving directly to her, rather you say you call your male partner, we will give it to him, we don't recognize you as the head of the family. During rehabilitation, women not considered as house heads of household, जब rehabilitation करने की बात आती है उसको हमेशा एक घर का मालिक नहीं समझा। Increased vulnerability to violence भी post disaster में होता है। So ये during है, post की बात कर रहा है। Okay. So several case studies reflect that women are strong enough, they can work nicely on par with men in relief works, construction of roads, reconstruction, building houses, digging wells, building shelters, though they have though don't have enough skills, but still they can be helpful in some kind of unskilled labor activities also. So you cannot ignore that workforce. Role reversal, men migrate, women take that role as father of the family, head of the family, they will take care of the family. Interaction with government officials, marketing facilities, bargaining skills, yes, they can do very well. Orissa floods mein 2001 mein karke dikhaya. So they are capable of many things. Food for work program mein, suing mein, very good at gender sensitive mitigation measures. For the first time in Indian history, Gujarat mein jab Latur भुज में 2001 में अर्थक्वेक हुआ 26 जनवरी को, जब रिहेबिलिटेशन हुआ, नया घर बना के सरकार ने दिया, तब सरकार ने ये किया, जॉइंट ओनरशिप ऑफ हाउसेस, दैट फैमिली का मेल एंड फीमेल दोनों का नाम जोड़ दिया पट्टा में, डॉक्यूमेंट में, प्रॉपर्टी पेपर्स में। अरेंजमेंट ऑफ क्रचेस फॉर चिल्ड्रन एट वर्क प्लेस, जो जिसका छोटा बच्चा है वो महिला वर्क में आके बच्चों को भी पाले, बीच बीच में दूध भी देते रहे और काम भी करते रहे, ऐसे क्रिच फैसिलिटी वर्क प्लेस में होना चाहिए। ये मैंडेटरी भी है, ऑफिसेस में भी है, इंडस्ट्रीज में भी है, इवन ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर्स भी है, जहाँ दूध देने की बात है तो वहां महिला जाइए। रेलवे स्टेशन में भी है, आपने ध्यान दिया होगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फॉर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, जहाँ आप ले जा रहे महिला को काम कराने के लिए वहां ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, सेपरेट वॉशरूम्स दीजिए, मोबाइल लेबोरेटरी दीजिए, सैनिटेशन मेजर्स रिलीफ कैंप्स बढ़ाइए, रिहेबिलिटेशन ऑफ विडोज एंड सिंगल वुमेन इन अ सिक्योर एंड सेफ प्लेस। जब रिमांड होम्स में महिला को रखा जाता है, जब विडोज सिंगल वुमेन होता है, उसके साथ अटमोस्ट केयर लेना पड़ेगा, वरना वो रेड ट्रैफिकिंग का शिकार बन सकता है। रिहेबिलिटेशन शुड बी प्रॉपर, जस्ट कांट लीव देम लाइक दैट। और ब्रिज कोर्स फॉर नॉन स्कूल गोइंग गर्ल स्टूडेंट्स, कुछ पढ़ाई छूट गया तो ऐसा कोर्सेज डेवलप करिए, मॉड्यूल्स डेवलप करिए ताकि पढ़ाई छूटे नहीं, वो पढ़ाई जारी रहे। गर्ल स्टूडेंट्स टू बी इम्पार्टेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, masonry, computers, handicraft, etc. See, these many alternative things we can come up in the name of gender sensitive mitigation measures. They can even produce risk maps,
जो गांव में कहाँ रिस्क है वो आप बना सकते हैं, महिला भी बना सकती है, बता सकती है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम. डिजाइन वाटर एंड सैनिटरी सिस्टम्स, कम्युनिटी मोबिलाइज, दे आर वेरी गुड एट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. मैं शहर में भी देखता हूँ, अपार्टमेंट्स में क्लब्स होता है. जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ महिला का क्लब्स है. my wife is part of one of the club. They spend very good time together. किटी पार्टीज करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अच्छा नॉलेज शेयरिंग होती है. और इन गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग का अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है लोगों को जो पैसा की कमी है, जिसका प्रॉब्लम है, कुछ वेंचर करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो दे ऑल कलेक्ट मनी एंड हेल्प दैट लेडी. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वेरी गुड एट in community mobilization, trained in simple ways to protect children from disease or disasters. If you train a woman to give simple first aid, she can act like a doctor to her family. अपना परिवार के लिए डॉक्टर बन सकती है अगर छोटा मोटा आप शिक्षा देंगे उसको. पट्टी कैसा बांधता है, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन टेक्निक कैसा होता है, 30 चेस्ट कंप्रेशंस with artificial breaths every 2 minutes. ये सिंपल टेक्निक है, एनीबडी कैन डू. She can also do non-structural mitigation initiatives like in imparting training, enhancing skills, etc. They are very good at it. So we need to focus on many things like using disasters as an opportunity to empower women, not as a threat. Rather, there is an opportunity. It's an opportunity, blessing in disguise. Attention to security, especially violence against women. You have to enhance the security of women, especially widow and young adolescent girls. Role of media can play a positive role, vital role in showing the world what exactly is going on at that point of time with any of the gender. Microcredit programs focusing on women to ensure livelihood after disasters. Participation of women, CBDP, community-based disaster preparedness, community-based disaster management, women-specific projects, community-inclusive projects with women representation. Ensuring adequate representation of women in training programs. Wherever you train, you ensure that you do have equal number of male audience along with female audience. Female trainers, you need to have no gender segment in training. Sensitization of Ministry of Labor for gender sensitivity, as women work mainly in unorganized and semi-skilled sector where they are underpaid and there is no union representation. There you need to focus upon increase their wages on par with men. So this kind of areas you need to focus. UNACHA, you might have heard about it, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, recommends that adapt and act C framework to build gender sensitive resilience. The 9-step framework focuses on action towards gender equality. Analyze gender differences. What is the differences that exist? You kindly analyze first. Then design services to meet needs of all. Access for women, girls and boys and men. Participate equally. Train women and men equally. And address gender-based violence in sector programs. कहाँ दिक्कत हो सकता है महिला का, वहाँ आपको जरूर एड्रेस करना चाहिए प्रोग्राम्स के तहत. कलेक्ट, एनालाइज एंड रिपोर्ट सेक्स एज डिसएग्रीगेटेड डेटा. ये वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा नहीं मिलने पर आप कुछ नहीं कर सकते. You need to know how many females are suffering. Then only you can intervene, do something good for them. Target actions based on a gender analysis. Coordinate actions with all partners. ये जो है एक स्ट्रेटेजी है, इंटरनेशनल लेवल में माना जा रहा है. नॉर्मली क्या होता है, जेंडर एनालिसिस करने के लिए समय नहीं होता है. क्राइसिस में क्या समय होगा, पहले खाना दो, शेल्टर दो, उसके बाद आदमी का जान बचाओ, उसके बाद आप देखेंगे ना महिला पुरुष का क्या है. So this is the usual complaint what we get. Aid workers have often raised the concern that after the disaster, the focus is on saving lives with relief. There is no time for a gender analysis. This can be addressed. अगर टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो आपको रैपिड जेंडर एनालिसिस करना होगा, which provides information about the different needs, coping capacities and pre-existing societal gender norms. कैसे समाज चल रहा है, समाज का पूरा परंपरा आपको जानना पड़ेगा पहले से. The minimal initial, ये आपने सुना होगा, very interesting package है. I got trained on this. The minimum initial service package (MISP) for reproductive health. जो महिला का जो प्रेग्नेंट होते हैं, फिर चाइल्ड डिलीवर होते हैं, नियोनाटल केयर से एंटीनाटल केयर, सब देखने के लिए क्या क्या जरूरतें होगा, सामान किस प्रकार से आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरह काम हो सकता है घर में भी, वो सबका ट्रेनिंग इसमें मिल जाता है. इज अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ प्रायोरिटी एक्टिविटीज दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एट द ऑनसेट ऑफ एन इमरजेंसी. जब इमरजेंसी होगा, आपको ये अच्छा किट एक बना के तैयार है आपके पास.
You can get trained on this. I myself got trained. The MISP can be implemented without an in-depth RH needs assessment because documented evidence already justifies its use. Already documented evidence है. करना क्या है? क्या चीज आपको लेके चलना पड़ेगा जब pregnant women के साथ आप deal कर रहे हैं? Everything is written, documented. It's a very big module. Everybody can get trained. No need to be a doctor. So this is very interesting package. If you are trained, you can perform during the emergency. Conclusions are these. Both samay le liya, I understand. That's why I'm running fast. Disasters have differential impact, but most of the disaster database is still gender blind. As you all know, we have seen examples. Sex and age disaggregated data, which is missing, which needs to be captured. Databases to provide sad data for disasters. That is very important to move forward. Disaster management planning, government and humanitarian organizations are working together. Gender integration into scenario-based emergency preparedness planning by considering the differential impact of disasters of men, women, boys, and girls in the disaster scenario. This has to be worked upon. And men and boys are an important partner in gender transformative humanitarian actions. Engage with men and boys during emergency preparedness as well as response phase for discussing issues of gender and resilience. We need to engage everybody, every stakeholder of the society, not only men, boys, women, girls, etc. Organizations should develop standard operating procedures for addressing gender issues and adapting a do no harm approach. Nobody should get into trouble. That should be the approach. Addressing the issue of time for gender analysis. कब करना है, कैसे करना है. Conducting gender analysis for rapid होना है वो भी. For disaster prone areas using secondary data, you need to collect in advance that can be further built on during emergencies to know the pre-existing gender roles and understand the impact of changing roles on women, men, boys, and girls. To understand this, we need to collect secondary data in advance to understand the pre-existing gender roles of that particular society. Implementation of MASP, already spoke the same thing. Is the beginning in the early days and weeks of an emergency. Systems like the gender marker can help in bringing a basic level of monitoring accountability to our humanitarian efforts. Application of gender marker during proposal development, as well as you need to identify in advance what could be the probable gender gaps. Accordingly, you can provide solutions. So planning with less than half of the community can only create lacunae. What does that mean? Women population is close to 48 to 50%, almost 50% in this world. So how can you ignore such percentage of population and plan and think that you have done justice? It is never true. So if development and emergency management fail to empower women, they fail to empower the community. If you don't empower women, you are failing to empower the community. This is the crux of it. I think this is last but one slide. If an egg is broken by an outside force, a life ends. आप देखिए कोई जानवर अंडा दिया और उसका ऑफस्प्रिंग आने वाला है और बाहर से कोई जबरदस्ती छोड़ दिया तो अंदर का जो भी ऑफस्प्रिंग है वो मर जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगा. अगर इफ एन एग ब्रेक्स फ्रॉम विद इन, अंदर से वो तोड़ के बाहर निकलता है तब वो जिंदा, लाइफ बिगिंस. करेक्ट. तो इसीलिए ये बदलाव हमको अंदर से लाना पड़ेगा. ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम विद इन. अंदर से बदलाव. समाज में आप क्या देखना चाहते हैं? दोनों जेंडर का बराबर इज्जत का साथ आप रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. So you should change yourself first. That change has to come from within. Great things always begin from within. Remember this. Thank you. Always.